व्हाट्सअप, क्या हाल? हेलो। चैंपियंस लीग नाइट वापस आ गई है। आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग। आर्सेनल हैव वन द लीड। एक्चुअली बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ इस मैच के बारे में। मैं खुद काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि किस मूड से आऊँ। लास्ट टाइम जब मैं बर्नमथ के अगेंस्ट फुल जोश में आया था, फुल जोश में, तो इट डिड नॉट एग्जैक्टली वर्क आउट रियली वेल. We lost against Bournemouth. We've lost against Southampton. Last four games, में we've lost three matches, which is just terrible. मतलब it is inexcusable almost. तो I am not in that kind of mood कि मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के अपने expressions बयां करूँ. But I am hopeful. Fingers crossed. Sporting है. It's a team that we should be beating. It's a team that we should win against. But will we is a big question. Manas bhai, what's up? Hello, thank you so much for joining. Hello, K bhai, all the best. Thank you so much. I hope you're doing well. I'm doing great. Absolutely fantastic. I have my cup of coffee here. I have my snacks. I will also be following Bayern Munich versus Real Madrid. That should actually be the blockbuster fixture. जो आज रात का blockbuster fixture है, that is going to be Bayern Munich versus Real Madrid, two powerhouse giants of European football. Arsenal versus Sporting is expected कि Arsenal जीतनी चाहिए, but let's see what happens. Almighty Deku, thank you so much for joining. KVY, all the best. But fire. Yes, guys. Pre-match press conference में मिकेल आर्टेटा ने बोला है that I am full of fire and that is how I want to play. अब क्या ये फायर एक्चुअल फायर हमको ग्राउंड पे दिखेगा मिकेल आर्टेटा की तरफ से? वी डू नॉट नो. आई डू नॉट नो कि क्या वो ड्रैगन की तरह ही इज गोना ब्रीथ फायर, और या फिर वो एमिरेट्स में आग लगा देगा. ही हैज वन ऑफ दोस टू ऑप्शंस. तो वो लेके आई एम अ लिटिल बिट कंसर्न. एक सेकंड में जरा अपना सेटअप थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ. सॉरी. मैं एक्चुअली द बॉयज देख रहा था. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग. जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा मैं नर्वस ना हूँ. तो जस्ट मेरे को 2 मिनट देना, मैं सब कुछ सेटअप कर देता हूँ फटाफट से. ये अभी भी बर्नमथ आर्सेनल वाला स्कोर लाइन लगा हुआ है, तो मैं उसको फटाफट से ठीक कर देता हूँ. तब तक अपन टीम लाइनअप्स देख लेते हैं. दोनों ही टीम के पास एक एक गोल का वो है. जस्ट शेयर माय स्क्रीन. कि भाई अगर आज बर्नमथ वाले गेम की तरह खेलेगी आर्सेनल तो दिक्कत हो जाएगी ऑब्वियसली. उसमें तो कोई शक है ही नहीं. वो तो ऑब्वियसली दिक्कत हो जाएगी. बर्नमथ और साउथहैम्पटन और सिटी वाले गेम में जैसे आर्सेनल खेली थी, अगर वैसे आज खेलेंगे तो फिर तो खत्म है. फिर तो सीजन खत्म है. आज का मैच छोड़ो, आगे इसके बाद मैनचेस्टर सिटी का मैच है. वो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, एक्सट्रीमली नर्वस हूँ. इसके लिए भी नर्वस ही हूँ, बट उसके लिए भी मैं काफ़ी नर्वस हूँ, क्योंकि अगर आज मान लेते हैं गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, देन आर्सेनल के प्लेयर्स को बेमतलब का फटीग झेलना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट देम इन द मैनचेस्टर सिटी वाला गेम. मैनचेस्टर सिटी का कोई भी मिडवीक फिक्सचर नहीं है. मैनचेस्टर सिटी आराम से रेस्ट करके संडे को खेलेगी हमारे अगेंस्ट. सो दे विल नॉट हैव टू फेस दैट फटीग अगेंस्ट अस. हमको हमको फेस करना पड़ेगा. तो आई एम होपिंग कि 90 मिनट्स में ये गेम खत्म हो जाए. आई डू नॉट वांट दिस गेम टू स्ट्रेच इनटू एक्स्ट्रा टाइम. एब्सोल्युटली नॉट. David Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Martinelli, Gyökeres. Guys, ये सेम एग्जैक्ट आर्सेनल टीम है जो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलने वाली है नेक्स्ट वीक. इनके सब्स्टिट्यूट्स में मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, पर उससे पहले आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक कि बेंच पे कौन कौन है. आई सी बेन वाइट, लुइस केली, नॉर्गार्ड, डूडजियाक, हैवर्ट्स, डाउमन, हिसूस, ट्रॉसार्ड. तो कैलाफियोरी, ओडेगार्ड एंड साका and Timber and Merino तो लंबे टाइम के लिए बाहर है, but Calafiori, Odegaard, Saka and Timber are still out with injuries, and this is not good news coming before Manchester City. So bench पे we don't have the strongest bench. We do have Trossard, Jesus, Dauman, Havertz in forward line. Norgard है हमारे पास. Things start to go wrong. Lewis Kelly भी है, Ben White भी है, but Ben White का form has been poor. काफी लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन नॉर्गार्ड को स्टार्ट देना चाहिए था.
गेम पे डिपेंड करता है, गेम पे डिपेंड करता है कि क्रिस्टियन नॉगार्ड को स्टार्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इफ मार्टिन जुबिमेंडी कैन परफॉर्म अगेंस्ट स्पोर्टिंग तो ठीक है। मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिस्टियन नॉगार्ड को स्टार्ट मिलेगा कि नहीं। उस वाले गेम में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस 7 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को, वुड रियली अप्रिशिएट इट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इफ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई create or try to create lots of funny reels and posts to make you all laugh. So please check that out. अल्तमाश कह रहा है मैटर खत्म है, फिर तो 100% मैटर खत्म है। अगर हम एक्स्ट्रा टाइम में गए तो। एक सेकंड, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? हाँ, स्पोर्टिंग का लाइनअप देख लेता हूँ। सिल्वा, इनासियो, डियोमांडे, करेज्मा, अराहो, मोरिता, हिलमांड, कैटमो, ट्रिंचाओ, पोते एंड सुआरेज। बेंच पे कोई है? Quenda is going to be a threat. I don't know why they're not starting with Quenda. Fresneda is out. कुछ प्लेयर्स को वो भी है, दे हैव सम इंजरीज। स्पोर्टिंग ने लास्ट टाइम बोर्डो ग्लिम्ट को हराया था, फिर हमसे हारी है। दे यूजुअली डू नॉट लूज एट होम एट ऑल। लास्ट अपना अवे गेम भी स्पोर्टिंग जीती थी अगेंस्ट एस्ट्रेला एमाडोरा, एंड हम अपना होम गेम हारे थे। सो दैट इज नॉट वेरी गुड न्यूज़। गाइस अपने चैट्स आते रहने देना, कीप गेटिंग योर चैट्स इन, प्लीज मेक श्योर कि आपने लाइक जरूर कर दिया होगा स्ट्रीम को। व्हाट्सअप माय गोट, आज लग रहे हैं वी विल प्ले बेटर फुटबॉल देन यूजुअल, टून इन आर्सेनल, कम ऑन यू गनर्स, लेट्स होप सो, लेट्स होप सो। व्हाट एल्स कैन वन एक्सपेक्ट? आई मीन, अगर मिकेल आर्टेटा प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है कि आई एम फुल ऑफ फायर, राइट, तो इसका ट्रांसलेशन मेरे लिए है कि भाई टीम में पूरा जोश भरे रहना चाहिए, राइट, जोश होना चाहिए टीम में। एंड अगर वो मेरे को पिच पे नहीं दिखा आज, देन एवरी सिंगल स्टेटमेंट ही मेक्स इन द प्रेस मैच, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एब्सोल्युटली यूजलेस। इट इज कंप्लीटली यूजलेस। आप मेरे को पिच पे परफॉर्मेंस दिखाओ। बर्नमथ के अगेंस्ट नहीं दिखी मेरे को, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट नहीं दिखे मेरे को, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट नहीं दिखे, जगह आप कैरबाओ कप में खेले थे। ये मैच और अगला मैच, आई मीन बर्नमथ का मैच भी बहुत क्रूशल था, एक्सट्रीमली क्रूशल था बर्नमथ वाला मैच, बट उसमें कंप्लीटली हम ऐसे बच्चों की तरह वी वो प्लेड ऑफ द फील्ड। तो आप कितने भी स्टेटमेंट्स दो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मेरे को पिच पे रिजल्ट चाहिए। अगर पिच पे रिजल्ट नहीं मिला तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट गेटिंग थ्रू टू द टीम, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द टीम वेल इनफ। Eze will bring that magic, I believe. I hope so, Bitter. I absolutely hope so. गौरव भाई व्हाट्सअप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या हाल है? व्हाट्स योर व्यू ऑन आर्टेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस? ही इज ऑन फायर। मैं इसी की बात कर रहा था, यही कि अगर वो बोलता है, ही मेक्स दी स्टेटमेंट्स बिफोर द गेम और आफ्टर द गेम ही मेक्स एक्सक्यूजेस और व्हाटएवर द सीन इज, शो इट ऑन द पिच तो मानू, वरना एक काम करो, जस्ट इग्नोर द मीडिया, जस्ट गेट आउट ऑफ देयर, ठीक है? स्टॉप बीइंग दिस पीआर प्रैक्टिस्ड मीडिया सर्टिफाइड मीडिया चाइल्ड या समथिंग लाइक दैट, कि भाई मैं तो ऐसी बातें बोलूंगा। शो इट ऑन द पिच, मेरे को पिच पे दिखाओ, वरना बातें करना बंद करो। गुड लक के भाई, थैंक यू सो मच। अक्षय, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट कि आप लोग आए हो। अभी रात के 12 बजे हैं, 12:30 15 मिनट, 15 17 18 मिनट में मैच चालू हो जाएगा। 4-4-2 रख के जोश नहीं दिखेगा। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। आई मीन, फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं मिकेल आर्टेटा की, तो इट्स नॉट अबाउट द फॉर्मेशन, इट्स अबाउट द पैसेज ऑफ प्ले। हाउ आर यू ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डिफेंस टू अटैक? द फैक्ट कि मैनेजर्स लाइक इराओला, जब बर्नमथ वाला मैच हुआ था, इराओला हैज फाउंड आउट आवर टैक्टिक्स, पेप ग्वार्डियोला हैज फाउंड आउट आवर टैक्टिक्स, साउथहैम्पटन हैव फाउंड आउट आवर टैक्टिक्स। ये साइडवेज पासिंग, ये बैकवर्ड्स पासिंग, ये नहीं चलने वाली। सब ने फिगर आउट कर लिया है, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट ऑफ द सीजन पे फिगर आउट कर लिया है। यू नीड टू कम अप विद अ प्लान बी, यू नीड टू एडजस्ट, यू नीड टू इनोवेट, थोड़ा सा चेंज करो अपने सिस्टम को। ट्राई टू प्ले द बॉल थ्रू डिफरेंट चैनल्स। जरूरी नहीं है बस एक ही चैनल के थ्रू तुमको प्ले ही करना है, कि वही तरीका आता है हमको, हम वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाकी सारी टीम्स हैव पिक्ड अप ऑन इट मेरे भाई। अगर आप यही खेलते रहोगे तो फिर जरूर 100% आप गोल खाने वाले हो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स तो भूल ही जाओ भाई। जब होम पर आप बर्नमथ के अगेंस्ट हार रहे हो, ठीक है, देन
फिर क्या ही रह गया उसके अलावा। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, 2 मिनट देना बस। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। बोurnemouth से कैसे हार गया यार, वो वाला मैच कभी हारना ही नहीं चाहिए था। दैट वाज अ एब्सोल्यूट डिजास्टर जो स्पोर्टिंग के अगेंस्ट हुआ, जो bournemouth के अगेंस्ट हुआ, बट छोड़ो अब तो हो गया। टीम लाइनअप्स ज्यादा बहुत सारा चेंजेस नहीं है। राया, मॉस्केरा, एक सेकंड में लेफ्ट में कौन है, हिनकैपिए, फिर है जुबिमेंडी, राइस, मिडफील्ड में मैडुएके, मार्टिनेली, योकेरेज, और कौन है, एजे, फाइनली हैवर्ट्स की जगह एजे मिडफील्ड। हैवर्ट्स को खिलाने की इसकी जरूरत कैसे होगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, पर छोड़ो जो भी है। कीप सेंडिंग योर चैट्स एंड अपने अपने प्रेडिक्शंस भी बताते रहना। हिनकैपिए एंड मॉस्केरा वी बिलीव। बिल्कुल सही बोला भाई। यार अब वही है ना यार, पिछले एक हफ्ते में हम सब आर्सेनल फैंस ने बैठ के वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट इज पॉसिबल टू डिस्कस। मतलब हर एक चीज डिस्कस कर लिया हमने, तो और कुछ डिस्कस करने को बचा ही नहीं है। या तो आप परफॉर्मेंस दो, वरना आप बकैती करना भूल जाओ। अबे कहाँ गया यार। हम्म। हम्म। एंड गाइस सब्सक्राइब कर देना, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। 2-1 आर्सेनल कह रहा है गौरव। बेटर कह रहा है कि हिनकैपी एंड मॉस्केरा वी बिलीव। आई यूजुअली डोंट गिव प्रेडिक्शंस क्योंकि दे यूजुअली गो रॉन्ग, तो मैं प्रेडिक्शन देता नहीं हूँ। इससे क्या हो गया, मेरा टिकर क्यों नहीं चल रहा। रिफ्रेश कर देना, चल जाएगा। ये तो चल रहा है ना। हाँ ये चल रहा है। आज सैंडी भी है भाई, चैंपियंस की चर्चा में सैंडी भी बैठा हुआ है। सो नाइस टू सी, वेल डिजर्व्ड। तो चल ही नहीं रहा यार। क्या छोड़ो गाइस, 10 लोग देख रहे हैं स्ट्रीम को, जरूर लाइक कर देना प्लीज। बेटा कह रहा है एमएलएस का फॉर्म इजंट दैट गुड, आई नो इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लेइंग टाइम एंड व्हाटएवर, बट एट दिस मोमेंट वी कांट टेक रिस्क्स। लेफ्ट बैक पे तो हिनकैपिए शुड स्टार्ट। 100% आई एग्री। मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में जो कैराबाओ कप फाइनल था, जब हिनकैपिए वाज सेंट ऑफ, सॉरी जब हिनकैपिए को येलो कार्ड मिला, उसके बाद से हमारा गेम थोड़ा बिगड़ना शुरू हो गया। Mridul, what's up? Bye. Thank you so much for joining. All the best, K. Bye. As a City fan, I want you to go as deep in UCL as you can and possibly win it because you deserve one. Thank you so much. Wow. Wow. That is amazing. Amazing. Thank you so much, भाई. Thank you so much, Mridul. Appreciate it. Right back पे टिम्बर नहीं है तो start Mosquera and maybe bring White on later. Depend करता है कि हमारा स्कोर लाइन क्या है। अगर हमारा स्कोर लाइन ठीक है, then आप बेन वाइट को ले आना, वरना just let it be. Let Mosquera have his minutes. And let's see how Mosquera plays, bhai. I don't think he's going to be moving forward too much. I think हम left hand side से ज़्यादा attack करने वाले हैं because Mosquera is not very good at overlapping at all and tracking back even worse. He's not that fast. हमने Brentford के against ये exact चीजें देखी थी. We saw these mistakes were made against Brentford. So let's not make Mosquera into some kind of an overlapping right back. It is not his job. His job is to defend. He's a good defender. उसको defend करने दो and please माफ करो बाकियों को. गौरव कह रहे कि अटैकिंग वाइज अच्छी है स्पोर्टिंग, बट दे विल गिव इनफ स्पेस फॉर आर्सेनल प्लेयर्स टू
एक्सप्लॉइट स्लैश टेक एडवांटेज. जब हम स्पोर्टिंग के अगेंस्ट उनके ग्राउंड में खेले थे, दे हैड ओपनड अस अप क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. एक दो बार उन्होंने हमको काफी परेशान किया था. So there is going to be that threat. Let's not forget there is going to be that threat from Sporting. They do have players. And let's not forget उन्होंने 5-0 बोडो ग्लिम्ट को भी हराया था. So they do have players who are capable of scoring goals. इस चीज को नहीं भूलना चाहिए. But that being said, आर्सेनल है, होम पर है, चैंपियंस लीग है, मार्टिनेली खेल रहा है. आई होप मार्टिनेली अपना फॉर्म, जैसे उसने स्पोर्टिंग के अगेंस्ट जो काय हैवर्ट्स को पास दिया था एंड काय हैवर्ट्स स्कोर्ड दैट गोल, जिसकी वजह से वी आर गोइंग इनटू दिस फिक्चर विद अ 1-0 लीड. आई होप वही वाला फॉर्म मार्टिनेली एंड काय हैवर्ट्स थोड़ा दिखाएं. आई नो कि काय हैवर्ट्स स्टार्ट नहीं कर रहा है, बट आई मीन आई होप कि वो अच्छे फॉर्म में खेले. चलो, दोनों मैचेस को फॉलो करूंगा मैं. आई विल बी वाचिंग बायर्न वर्सेस रियल एज वेल, वो टीवी, एंड ऑन माय लैपटॉप आई एम गोना बी वाचिंग आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी. 10 मिनट में मैच चालू होने वाला है. चार्ल्स भाई कैसे हो? एडी भाई ने धोखा दे दिया बाय द वे. चार्ल्स भाई, आई रियली अपोलोजाइज. एडी भाई हैज गिवन मी अ धोखा. वो कह रहा है कि उसको कल सुबह बैडमिंटन खेलने जाना है, तो वो नहीं आ पाएगा, ऐसा उसने मेरे को बोला. आई वॉज वेरी अपसेट. मैंने उससे 3 दिन पहले पूछा था कि आएगा कि नहीं, उसने बोला था हाँ आऊँगा. एंड फिर मैंने अभी उसको लिंक वगैरह भेजा, कह रहा आ जा, तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को कल बैडमिंटन खेलने जा रहा है, सॉरी. वो ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है. लेट्स नॉट, ही इज लाइक दैट. आई होप उसका बैडमिंटन रैकेट टूट जाए, व्हाटएवर. पर वो कह रहा था कि मैनचेस्टर सिटी वाले गेम में आएगा. ही विल बी देयर फॉर द मैनचेस्टर सिटी वाला गेम. एंड एंड अगर हम आज जीतते हैं, देन ही विल कम फॉर एवरी सिंगल गेम आफ्टर दैट. दैट इज व्हाट ही हैज सेड. सो या, 13 people watching, guys. Please make sure कि stream को like कर दें. The hate watchers have also joined us. Akshay कह रहा है L Addy. Yes, yes, guys. L Addy. Absolutely, very true. L Addy. Basically, Zidane brings great work rate from all his players. Absolutely, absolutely. Hate along. Let's go, bhai. Get it. Like Manchester United doing a hate along. Uh, just somehow trying to stay relevant on Champions League night. I know you're watching Bayern versus Real Madrid. ठीक है, don't lie to me. मुझे पता है तुम यहाँ आके मेरे को बस गाली देने के लिए आए हो, just in case something happens. But in reality, you're actually watching Bayern versus Real Madrid. So let's just drop this facade and be real with each other for a little bit. ठीक है? Uh, ooh. अच्छा, बायर्न वर्सेस रियल वाले गेम में क्या लगता है क्या होगा? Do you think that Real Madrid is going to be doing a remontada, or do you think that Bayern Munich is just going to be comfortable and they're just going to go through? बेचारे सैंडी से मिठाई के बारे में पूछ रहे हैं. आई मीन, कम ऑन गाइस. But yeah, I mean, Robin Singh can have all the mitai he wants. Is Arteta trying to do something like what Jose does? Be pragmatic. क्या सवाल पूछा है, क्या शब्द है ये? भाई, आई थिंक एट दिस टाइम आर्टेटा अगर ओवर pragmatic हो रहा है ना, दैट इज द मिस्टेक. ही इज ट्राइंग टू बी ओवर pragmatic. ही इज ट्राइंग टू बी ओवर calculative. He needs to stop that. He needs to start playing a little bit of free flowing football, mere bhai. He needs to start scoring goals and trust in his defense. Otherwise, it's useless. He better start playing some free flowing football ताकि goals आने शुरू होएं. ओहो, मैं अपना prediction डाल देता हूँ.
ओहो, आर्सेनल वाले गेम में मैं प्रेडिक्शन नहीं डाल सकता. सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट. आई कैन नॉट डू दैट. Okay, match is about to start in 7 minutes. Almighty Tego keh raha, na Keva, even I support United, but not here to abuse you. Generally love you as a person. How sweet. I mean, yeah, come on, you guys. What are you going to make me cry? you're going to make me. You're going to make me cry. Bayern will win, but I really appreciate it. Thank you so much for those sweet words. Bayern will win. I am a Real Madrid fan, by the way. So in the Real Madrid versus Bayern game, जो Santiago Bernabeu पे हुआ था, the game that I was watching, और जितना मैंने देखा है उसके बाद हाईलाइट्स भी देखे, I saw both teams creating chances. I saw Mbappe and Vinicius Jr. and others as well testing Manuel Neuer again and again. वो बस Manuel Neuer की रात थी. I mean, he was just having a magnificent night. अगर अगर आज ये फिर से chances create कर सकते हैं, then I feel Real Madrid have every chance to do a remontada. Although that being said, Bayern are very strong in attack. By that Michael Olise, he will just run through Real Madrid's midfield, and that is going to be a big big problem for them. तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा. मेरी नाक में खुजली क्यों होने लग जाती है जैसे मैच चालू होने वाला होता है. सॉरी. आई थिंक बाकी सारी चीजें तो अपनी सेट हैं. स्कोरबोर्ड इज सेट, television is set, laptop is set, chat is set. I am not set. Unfortunately, I am not set today. मैं सेट होऊंगा गाइस, मैं सेट होऊंगा संडे को फॉर द मैनचेस्टर सिटी वाला मैच. तो या मैं डेफिनेटली सेट होऊंगा उस दिन. राघव कह रहा है कि ऑल द बेस्ट केवी भाई, होप यू लूज एंड वी विन. Raghav is a Real Madrid supporter, huh? Must be, has to be. History in our sights. That is what the tifo says. और बताओ के भाई कैसे हो. बस थोड़ा सा just looking forward for this game. Long time no see. क्या बात कर रहा है. आज मैंने दिन में एक स्ट्रीम करी. मैं रोज शॉर्ट्स या रील्स अपडेट करता रहता हूँ. मैं काफी ऑनलाइन रहता हूँ. डिस्कॉर्ड पे मैं आज मैंने एक स्ट्रीम केवी रिएक्ट्स पे सुबह करी. फिर दोपहर और शाम को मैंने अपने केवी प्लेज अपने गेमिंग चैनल पे स्ट्रीम करी. अब रात में मैं चैंपियंस लीग की स्ट्रीम कर रहा हूँ. एंड उसके बाद मैंने आज 2 रील्स भी अपलोड करी. तो आई एम नॉट द वन हु इज मिसिंग इन एक्शन माय फ्रेंड. बट या लॉन्ग टाइम नो सी. कैसा है. मैं बढ़िया हूँ. सिर्फ गेम की वजह से बात हो जाती थी, अब तो याद आती है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या है. मतलब एनी टाइम इन डिस्कॉर्ड रीच आउट, बात कर लो. यू कैन डीएम मी ऑल्सो. आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो रिप्लाई नहीं करते. मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ एज मच एज पॉसिबल, अनलेस तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेट करना शुरू कर दो मेरे को, तब मैं रिप्लाई नहीं करने वाला. Free flowing football, exactly, but all this should be in a pattern or a system. I hope Arteta fixes it. I hope so too. I hope so too. I think Martin Tyler is the commentator in today's game. Yes, he is. I can hear him. आज commentary के साथ देखूंगा मैं. So I'm gonna be happy with that. Do you like Haryanvi songs? I don't listen to a lot of Haryanvi songs. In fact, I don't listen to a lot of songs. I know it's very strange, right? कैसा सा आदमी है ये. मैं गाने ही बहुत कम सुनता हूँ. मैं रेयरली कभी गाने सुनता हूँ. आई नो इट्स साइकोटिक, बट मैं गाने बहुत कम सुनता हूँ. मजाक भी नहीं कर रहा. माय माय मोस्ट फेवरेट सिंगर टिल डेट इज आतिफ असलम. मैं जब मन करता है मैं उसी के गाने सुनता हूँ, और किसी के गाने सुनता बहुत ही रेयरली. मेरी प्लेलिस्ट इज ओनली मेड फॉर लाइक जब मैं बाहर जाता हूँ, पार्टीज में जाता हूँ या फिर ड्राइव पे जाता हूँ, उसके लिए क्यूरेटेड है. घर बैठ के मैं गाने नहीं सुनता. दैट इज वियर्ड. अब किसी को वियर्ड लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में. हाँ.
इनकैपिए, गैब्रियल सलीबा, मॉस्केरा, राइस। भाई देखो, बेसिकली सेकंड लेग है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। जीतना ही जीतना है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। हम्म। जब भी आर्सेनल का मैच होता है, कोई ना कोई कमेंट आ जाता है सेट पीस के बारे में। आई मीन, वी शुड बी वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली। चलो गाइस, मैच चालू होने वाला है। डाउमन में ऐसा क्या खास है? तो बेसिकली अगर मैक्स डाउमन को तुमको अभी इस स्टेज में समझना है, ही इज अ प्लेयर who only has one direction, and that direction is towards एजाइल। उसका मूवमेंट बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी टर्न अराउंड करता है। उसका फर्स्ट टच इज रियली गुड, हिज बॉल कंट्रोल इज रियली गुड, एंड हिज पेस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ऑल दीज थ्री कॉम्बिनेशन इन वन प्लेयर कैन बी वेरी लीथल। तो फटाफट टर्न करना, बॉल को कंट्रोल में रखना है, उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी। जब वो ड्रिबल करता है बॉल के साथ, तो बॉल उसके पैरों पे ही रहती है। लोग उस पर टैकल मारने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो टैकल कभी लगता नहीं है, वो हमेशा मिस होता है। सो दैट इज व्हाट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट अबाउट मैक्स डाउमन। चलो, मैच चालू होने वाला है। मैच स्टार्ट हो गया गाइस, कम ऑन यू गाइस, ऑल द बेस्ट, लेट्स गो, कम ऑन। ओके, स्पोर्टिंग प्लेइंग इट आउट into their defense. Arsenal get the ball immediately. Declan Rice gets it. Ball goes out for a goal kick by. Not the best start from Sporting, but Arsenal को थोड़ा सा और better करना चाहिए था in that position. Sporting looking a little bit loose. याद रखना, स्पोर्टिंग भी अपना मैच बोडो ग्लिम से 3-0 हारी थी अवे। सो आई वोंट रियली से दैट देयर अवे फॉर्म इज एनीथिंग एक्सेप्शनल। कर दे पास, नाइस, गुड पास फ्रॉम सलीबा, पुअर पास फ्रॉम जुबिमेंडी। सलीबा का बहुत ही बढ़िया पास, हिनकैपिए का खतरनाक टैकल, एजे विद द बॉल, चांस फॉर आर्सेनल, प्लेज इट टू विक्टर योकेरेस। भाई गुड मूवमेंट देयर, वेरी गुड मूवमेंट देयर, आई लाइक द स्टार्ट फ्रॉम आर्सेनल। हाँ, बस ये जो फाइनल फाइनल बॉल है ना, उसमें थोड़ा सा बेटर करना है उनको। फाइनल बॉल में थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, वरना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बायर्न और रियल मैड्रिड का भी मैच चालू हो गया है। Is the remontada on over there? That game also will keep an eye on. By foul on Martinelli, ball free kick to Arsenal. Mm. Oh, bhai, Real Madrid have scored, bhai. Arda Güler has scored for Real Madrid, bhai. Arda Güler has scored for Real Madrid. Manuel Neuer is beaten at the Allianz Arena inside 1 minute. 1 minute के अंदर. How? भाई ये गोल कैसे लगा? I didn't even see. Did Neuer make a stupid mistake or something?
Bhai, I have to see the highlight of that goal, bhai. Meanwhile, Martinelli, Neuer, oh, Neuer's mistake, bhai. Neuer's mistake, stupid mistake by Neuer, bhai. Stupid mistake by Manuel Neuer. Unbelievable. By the tie is all equal between Real Madrid and Bayern, by the way. That is crazy. कर लेगी क्या? रियाल कर लेगी अपना रेमोंटादा? एक टीम, छह में से एक टीम, आठ में से एक टीम, सॉरी. डेक्लन राइस पीछे, फिर से पीछे पास कर रहे हैं यार. थोड़ा सा फॉरवर्ड पास करने की कोशिश करो. प्ले फॉरवर्ड लिटिल बिट मोर. मैडवे. अबे यार, मॉस्केरा को दे देता है यार. आर्सेनल बीइंग एबल टू ट्रांजिशन a little bit more easily. अभी देखो, अब फंस गए. डेक्लन राइस लाया है क्यों उधर? वहीं खिलाता है यार. कोई था ही नहीं यहाँ पे. दैट वाज. मैडवे के नीड्स टू डू माय बेटर. Homelander, what's up? KV bro, my club is finished. I mean, the day that you were cheering for Manchester City to beat you at your home ground when you're in a top four, when you're in the Champions League place, I mean, that should speak volumes about your character. I mean, what kind of a fan? अब तुम लोग आर्सेनल के fan base को गाली देते हो. I mean, what kind of a fan base cheers the opposition team when they're playing against them in a crucial game, in a game that should have been won? And then you lost that game 3-0. That is also pretty horrendous. Nice. Eze bhai. Eze is getting into spaces, bhai. First time shot लेना चाहिए था. Oh, nice from Hincapié, bhai. Martinelli. No, corner. I never cheered for City to win. I always wanted my club to win. There are some fake fans in the club cheered for that. There were a lot of them, but इतने सारे कहाँ से आ गए थे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था. Why there's so many people? But whatever, अब तो हो गया जो होना था. I mean, Chelsea, you don't want to go like the Spurs way, right? Eze is moving good by in the match. Bayern के पास chance. Luis Diaz. Corner to Bayern. Corner to Arsenal as well. Declan Rice. Oh, yeah, yeah. Too far. Come on यार, कुछ तो करो. Oh, Bayern have scored, bhai. It's 1-1. Bayern have scored. The game is 1-1. Bayern have the lead in the tie again, bhai.
Oof. Pavlovich ने मारा है ना? I think it is Pavlovich भाई. Nice. Mhm. Off the ball work rate has been amazing. Yes, I agree. They look better. They look like they want to pass the ball forward a little bit more, you know. So it looks overall, it looks a lot better. But I still, I'm still waiting for how they actually score a goal because they really need to score a goal. Thank you for joining, Arush. It's embarrassing at a new low to think that our fans are like Spurs fans. You also know Chelsea fans are not like this, but the whole club seems broken currently from the ownership to the fan base. Yeah, it does feel sad. And this is after you had a pretty decent season. Matlab, Conference League jeete, Club World Cup jeete, you all very happy about it. World Champions likha hua hai, right at the tunnel and everything. Just doesn't feel like a world champion team to me. I'll be very honest. Right there from FPL stream कल थर्सडे है ना कल क्यों विल आराम से फ्राइडे या सैटरडे को करेंगे मैंने एक मिनट सैटरडे को कितने बजे मैच है ये भी चेक करना पड़ेगा गुड टैकल फ्रॉम सलीबा फ्राइडे इफ देयर इज नो फिक्सचर आई थिंक सैटरडे को कितने बजे है स्पोर्टिंग चांस फॉर स्पोर्टिंग गुड टैकल फ्रॉम सलीबा अगेन मैडुएके फ्लर्टिंग विद डेंजर जरा फटाफट से चेक कर लेता हूँ सैटरडे को 5 बजे है तो फ्राइडे रात को कर सकते हैं एंड आई थिंक फ्राइडे रात को कर देना चाहिए बिकॉज इट्स गोना बी अ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड FPL stream. There are a lot of ins and outs that are going to happen. कौन से world champions that CWC win was supposed to be a stepping stone to win bigger trophies? I rate the League Cup more than that Trump trophy. I was saying the same thing. I was saying the same thing, but nobody wanted to listen to me then. Everybody was too busy calling themselves world champions. It is a Trump trophy. I mean, any trophy that Trump has his hands on, you don't really want. That is going to be the same case with the World Cup. Good from Mosquera. Very good from Mosquera. Madueke moving forward, takes him on. Very well done. He could have gone further, but he has no support. No support. I see no support. गलती हो गई राइस से बॉल कम्स बैक टू स्पोर्टिंग इट्स द ट्रम्प कर्स बॉयज एपिसोड 3 देखा मैं वही देख रहा था इससे पहले तो स्पॉइल मत करना ठीक है मैंने आधा देख लिया है आधा बचा है तो डोंट स्पॉइल इट Oh, he's done well. It's a crazy episode again. I'm sure it is. In fact, मेरा बहुत मन कर रहा था अभी बैठ के देखने का but I cannot do that. In all seriousness, I cannot do that. भाई score a goal, please. Somebody score.
VAR is checking for a possible penalty. No penalty. I'll check it out. मैं खत्म होते ही मैं अपना दाल चावल लूंगा. I'll check it out. दो गोल पड़ चुके हैं बायर्न और रियल मैड्रिड में. मीनवाइल यहाँ पे इट इज स्टिल निल निल. भाई इसको दिया क्यों नहीं? हिनकैपिए सही पोजीशन में था तो. देयर इज टू मच ऑफ दिस अगेन. फिर से जुबिमेंडी को फंसा रहे हैं यार. ये क्या कर रहे हैं? दैट्स नॉट गुड. By the way, I'm 72 hours in Crimson Desert and still only in the first major city. भाई आई थिंक जब तक वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ना तब तक तुम आधा गेम तो कंप्लीट कर ही दोगे. आई थिंक. नॉट श्योर अबाउट इट बट. oof oof too casual. Not a bad attempt at a pass. It's a perfect game till GTA 6 releases in November. Fair enough. Fair. I don't think there's been a single attempt on target in the Arsenal versus Sporting match. I mean, it's been pretty. Too risky for my liking. What a pass to Madueke. Madueke loses the ball. भाई कुछ करो यार with the ball. Chance for offside. But there is literally 50-50 right now. Smack dab in the middle 50-50. What is what from Arsenal? They're playing a football match. Come on, move it forward, please. दे दे ना उसको. मांग रहा है दे दे बहनचोद. कभी भी नहीं देता ये. कभी भी नहीं देता वहां से वहां. नेवर. And now you give a shitty pass and you give the ball away anyway.
मतलब there was a better chance before this. You gave the ball away anyway. My God, that is not good. You're so confused over what to do. ओए होए. थोड़ा टारगेट पे रखता बेटर होता. Should have tested the goalkeeper. कैसा अर्चित? What's up? I am good, bhai. I'm good. I'm good. Just really, really hoping for a more for a better game from Arsenal right now. It's not exactly a quarter-final level game that I'm looking at right now. Arsenal haven't really created a lot of chances, a lot of opportunities. यहाँ पे पास दिया जा सकता था पर पास दिया नहीं. Decent defense. तो बता कैसा है? How's everything going? पता है कि आर्सेनल में मेरे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगती है जब ये फॉरवर्ड पासिंग नहीं देते हैं. Foul on Madueke, free kick, good turn, but true. But in their defense, it's only been 20 minutes. हाँ ठीक है, fair है, fair है. I just hope we have a better performance against Manchester City, yeah. But I don't see how. I think we do need Bukayo. I think he's just slightly better, slightly better. क्या मतलब he just does make a difference in the side. He does make a big difference in the side. Arsenal opportunity as a tries to shoot counter attacking opportunity. Martinelli fast and excellent. बहुत ही बढ़िया. Not a very good set piece. Oh, foul on Zubimendi. कुछ करो यार.
Not a lot of progressive passes. It's just same old. Even the even the crowd is so quiet. It doesn't feel like a UCL quarterfinal second leg at all. All the noise is coming from the Sporting fans. How is this a home game? Oh, this is so sad. Bhai, that has to be a foul. Morita foul. Madueke is going to take the free kick. I don't know. Let's see what happens. Come on, come on, come on. Get the goal. Just get a goal. Oh, nice free kick straight to the goalkeeper. Still so slow, yaar. Madueke taking a free kick. Yeah, that was not a very good free kick by straight at the goalkeeper. Sporting in. Why do you think Yankee owners are such a-holes? I have no idea. Maybe because they're just greedy, super capitalists. Maybe. I mean, our Yankee owners aren't that bad. They're more like family oriented, but good tackle from Mosquera. Throw in for Sporting. Yeah, this is fucking annoying. That- So fucking. Your Yankee owners were bad enough 5 years ago. I still remember that time. Huh. But they sorted the whole problem out. So now I'm okay with it. पहले तो क्रोंकीज के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा था बट दिस फिक्स द प्रॉब्लम दे अपॉइंटेड समवन टू टेक केयर ऑफ दैट विद इन द फैमिली ओनली जॉर्ज क्रोंकी जो स्टैन क्रोंकी का आई थिंक सन लॉ है या बेटा ही है he was called in to sort out the problem. So when he has a chance to pass and he takes it back instead of taking it forward. Gabriel is the one taking it forward, passing it. Madueke, someone make some space, god damn it. How are these guys so good in training and then मैच में कुछ इनसे पासिंग नहीं होती. मैन सिटी तो खा जाएगी हमको ऐसे. सिटी खा जाएगी हमको ऐसे. They will find space against us all day long.
कि भाई सॉर्ट करके भी जीरो ट्रॉफीज ही है वैसे, जस्ट सेइंग। नहीं, वी वन एन एफए कप, तो जीरो तो नहीं है। वी वन वन ट्रॉफी व्हिच इज नॉट इनफ, बट स्टिल during all that time. But yeah, at least we've sorted a lot of other issues that we had. We haven't sorted the trophy issue. Oh, oh, oh! First chance for Arsenal. Zubimendi did really good to put it through to Gyökeres, and Gyökeres could have finished, but good defending by Sporting at the end. देखो, ट्रॉफी के अलावा बाकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो गई हैं। एंथनी टेलर ने तो नहीं गिफ्ट करा था। इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश बाय ओबामेयांग, व्हिच लेड टू दैट। अब गिफ्ट करा था नहीं करा था, it's 8 years ago, man. Once कह रहा है where is the bottle? It's not here. Trophies is the only thing that is required at Arsenal right now. Every other thing has been sorted out mostly. Quality of players, number of players that we need, depth in the depth in the side. Corner for Arsenal. Zubimendi. Why is Zubimendi the guy who's heading the ball? Yeah. Was that comment from United fan? Homelander is a Chelsea fan actually. Vanch का पता नहीं. I don't know which team Vanch likes or is a fan of. But Homelander is a Chelsea fan. Vanch is a United fan. अरे I was playing. Oh my god. Off लग रहा है मेरे को. Against Manchester City, these things will not work out, भाई. Madrid have scored again, भाई. Real Madrid have scored again, by the way. Risky pass. Come on, make one good attack. Oh, भाई, what a free kick, भाई. Arda Güler again, भाई. He's beaten Neuer again. Arda Güler has scored twice. My God. The tie is equalized. क्या ही गेम चल रहा है यार वहां पे. Bloody Bayern bottle jobs. Bunch is a Barca fan. Okay, okay, okay. Oh, good control from Eze, but there's a lack of vision all over. Bhai. There is just a very, everybody lacks vision here. I'll be honest, I don't see a lot of fire. I see a lot of fire in Real Madrid. I don't see a lot of fire here. Bhai. We haven't had one shot on target. Arsenal need to defend this set piece. Always a nervous moment. Left footed, poor set piece.
Eze tries to take it forward and goes out for a throw. Bye. But Arteta said he's on fire. I mean, I don't know. I don't know what's going on. It doesn't seem like a very fiery kind of game. The match turns out to be a nil-nil draw. Oh my god. Rice needs to do something by. मैं बोल रहा था आपको Arteta is just faced and Rosinier. Nah, it's a bit much. That's a bit much. It's not. It's definitely no Rosinier. There is no such thing as short passing in Arsenal Football Club. Finally, finally, a little bit of magic in an otherwise absolute dull passing display. Onkesh कह रहा है कि Barcelona United turning red cards into match disasters. Well, that is their issue. Great cross from Martinelli. Madueke need better ball control. भाई क्या कर रहा है? Need lot better ball control from Madueke. Well played into Eze. By that should have been okay. Okay. Why always with the outside of his foot? Martinelli turn shoot. अबे यार, just even when we have a great opportunity, we find ways to not take advantage. How are Barcelona fans crying about that red from yesterday? They will literally cry about every loss. I mean, Vansh कह रहा है because that wasn't a red. I mean, so what you're saying is that there was another man who was running behind. So it wasn't exactly a last man challenge. Is that what you're trying to sell? Because they did go to VAR. The referee went and he saw on the screen right again, and he gave it a red card. So I think it's pretty unanimously. I think we have to all say that it was a red card. I think it was a red card. Yeah. I mean, the distance of the second defender wasn't that close that it could be considered. I mean, Sorloth had a really good chance to score a goal there. Hmm.
You know what should be a red card is this passing from Arsenal. It needs to get better. Oh, by Bayern have scored again. By Bayern have scored again. By the way, Harry Kane has scored. भाई यहाँ 4 गोल लग गए हैं एक हाफ में, यहाँ पे एक नहीं लगा है. Oh my God. You know what? Oh, I don't want to say it, but if Arsenal does manage to do something in the UCL, win or something like that, then I gotta say, man, it has to be the most sus champions ever. Sujan, why do I feel that this match will end as a boring nil-nil? I said that 5 minutes ago. I said that 5 minutes ago. I swear. I swear, man. Oh my God. Then imagine what Atletico versus Arsenal will be like. Yellow at max. What are you saying? Come on, bro. Yellow at max. No way. Are you saying that? We have been robbed. Nah, 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 nah. Oh no. Oh no. What has he done? What the fuck did David Raya just do there? David Raya almost fucked us by. Arsenal, Arsenal versus Atletico, the end of football. Raya almost fucked us by. It wouldn't have been okay, mere bhai. Oh, bhai, Real could have scored by. Bayern are looking so exposed, man. Corner to Arsenal. Keeper punches it out. Eze. Aye, aye. केपा को स्टार्ट करा था. नहीं बस. थैंक यू. थैंक यू हो गया उसका. My God. Oh, भाई विनी has a chance. Oh भाई विनी hits the crossbar भाई. क्या ही गेम चल रहा है यार बायर्न और रियल मैड्रिड का. एडर मिलिटा फोरहेड ब्रो सो प्रोट्रूडेड. Him and KSI should have a forehead competition. This has to be the quietest the Emirates Stadium has been in a Champions League game. My God, bhai. Oh, here we go. Chance, big chance for Sporting. Trinka, big chance still. Oh my God, chance. Oh, they've hit the post. Sporting hit the post. Bhai, how close was that? Bhai, Sporting almost scored. Bhai, they came really close by.
आप लोग निकाल लोगे ये मैच भी डार्क आर्ट से। ओ माय गॉड, Madrid are going to score. They have scored, bhai. Madrid have scored again. It's 4-4 aggregate, bhai. Arsenal are robbing me of watching this amazing football match, by the way. Bhai, what a game. क्या फाउल दे दिया क्या, क्या हुआ? भाई, a classic between Bayern and Real, भाई. Dictator Mbappe has scored, by the way. मैड्रिड को यूसीएल में कैसे याद आ जाता है फुटबॉल खेलना? नो आइडिया भाई. Come on, you can't let dictator get a UCL. Bhai, what is this dead rubber Arsenal sporting game, bhai? Okay, okay. Oh my god, another misplaced pass. जब भी ये फॉरवर्ड पास खेलते हैं ना, इनसे पास नहीं हो पाता, इनके बाकी सारे पासेस इनके वही आते हैं पीछे पास देने में. 5 goals versus 0. Dead. Oh my god, it is sad. It is sad. I'm missing a classic. I could have been calling this game. It is half time, bhai, between Arsenal and Sporting. क्या ही बोलूं. Okay, I'm shifting the game to Madrid versus Bayern. आपका वाला game बहुत boring. I'm watching Bayern. I'm watching Bayern versus Real Madrid as well, bhai. I'm watching Bayern. Do something, man. I'm feeling so ashamed. Do something, man. Play some good football. Damn it. Look at this. There is no chance. किसी घसीट फसीट के हम फाइनल्स भी पहुंच गए ना यूसीएल के. It means nothing. It's meaningless. What the hell am I watching? होमलैंडर हाफ टाइम हो गया, शिफ्ट टू समथिंग एल्स. ये लगा सकता हूँ क्या मैं? ओ परफेक्ट, थैंक गॉड. मैं कॉफी लेके आ रहा हूँ. जिसको बायर्न और रियल देखना है, आई डू नॉट ब्लेम यू. क्या क्या एनालिसिस? खाना पीना कर लेकर आओ, मैं कॉफी लेकर आ रहा हूँ. क्या एनालिसिस करूं मैं? कॉफी लेके आता हूँ, फिर एनालिसिस करूंगा. देयर इज नो फकिंग एनालिसिस.
भाई ये पेटीएम के कितने ऐड आएंगे, एक के बाद एक पेटीएम का ऐड आया जा रहा है. What do you think? Will Arteta go for a nil-nil at weekend or try to win for once? Oh my God, भाई, what is this nil-nil man? दूसरे गेम में 3-2 चल रहा है. Dead. So sad, भाई. This is so sad. भाई मैं यही हूँ. Sorry, एक सेकंड में ये हटा देता हूँ. अबे कहाँ गया ये? आई अपोलोजाइज. मैं बस कॉफी गर्म करने गया था बिकॉज गॉड नोज आई नीड अ लॉट ऑफ कॉफी टू सर्वाइव दिस मैच भाई. वो तो अच्छा है, बायर्न वर्सेस रियल चल रहा है टीवी पे और लैपटॉप पे मैं आर्सेनल का मैच देख रहा हूँ. बट व्हाट अ मतलब इट्स ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को पियानो बजाना सिखा रहे हैं and उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, आप बैठे बैठे हुए हो एंड यू डोंट इवन केयर, यू नो, लाइक दैट. एंड दूसरी तरफ एक रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है, लाइक स्टिंग का या फिर यू नो लाइक रेड हॉट चिली पेपर्स या किसी का रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है, मेटालिका का रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है एंड यूर यहाँ पे बैठे हुए आप किसी बच्चे को पियानो बजाना सीखते हुए देख रहे हो. इट इज लाइक दैट. क्या हाल है स्क्वाड गॉड भाई, कैसे हो भाई? बहुत ही ज्यादा लेम गेम चल रहा है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इस मैच को समझ में नहीं आया. आ गया सिक्सर एथलेटिको से बाहर कर. आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको तो क्या ही गेम होगा यार, क्या ही गेम होगा. पर अगर ऐसे खेलेंगे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आर्सेनल करेगी क्या. संडे को क्या करेगी आर्सेनल, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई. आई एम गोइंग टू नीड ए लॉट एंड लॉट ऑफ अल्कोहल ऑन दैट डे. आई विल नीड लॉट ऑफ अल्कोहल्स ऑन संडे भाई, लॉट ऑफ अल्कोहल्स. वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. बट केवी ब्रो, आर्टेटा हैज मेरे को तो नहीं दिखा भाई. मेरे को तो बिल्कुल कोई फायर वायर दिखा नहीं है आर्टेटा की तरफ से. आई एम सॉरी टू से. बट अगर आप लोगों को दिख जाए बताया था. मेरे को लग रहा है कि तो वो मेरे को लग रहा है कि वो एमिरेट्स में आग लगा देगा. मेरे को ऐसा लग रहा है देख के भाई. इट इज जस्ट नॉट अ वेरी गुड वॉच. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बट इट इज नॉट गुड. नॉट गुड एट ऑल भाई. ए भगवान. हाँ, मतलब नॉट अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट. Oh, why do you do this to us, God? Why do you do this to us? मैं क्या बोलूं यार स्कॉट गॉड यार. क्या बोलूं बताओ, क्या कैसे, हाउ डू आई स्पिन दिस इनटू एन एक्साइटिंग गेम बताओ. देयर इज नो वे. आज शुक्र है कि फॉरवर्ड पास रियो दे रहे हैं प्लेयर्स. हाँ, थोड़े बहुत फॉरवर्ड पासेस दे रहे हैं. आई एग्री विद यू, थोड़े बहुत फॉरवर्ड पासेस जा रहे हैं. बट तब भी यार जब ये फॉरवर्ड पास देना शुरू करते हैं ना, मैं आपको सही बताऊं, जब ये फॉरवर्ड पास देना शुरू करते हैं इनसे गलतियां होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इनको फॉरवर्ड पास देने की आदत नहीं है. जब ये बैक पास करते हैं ना तो लगता है वो वाह क्या बढ़िया पासिंग चल रही है भाई, सही चल रहा है, सब मस्त चल रहा है. एंड जैसे ये फॉरवर्ड पासिंग देना शुरू करते हैं, खच एक के बाद एक बॉल लूज करते रहते हैं. आई मीन गॉड इज डूइंग अस अ फेवर इजंट ही. केवी भाई, आंखों से खून आ रहा है. एजे क्या कर रहा है भाई? एजे हैज एक्चुअली बीन द मोस्ट क्रिएटिव player on the pitch. ठीक है, he has been the best player on the pitch. He's the only one who looks like he's trying to do something. But the problem is, oh, I don't know what the problem is. I don't. Zubimendi again फंसे जा रहा है, forward pass नहीं कर रहा again. Nobody is making a run with the ball. Nobody is running through the midfield. Everybody is always just looking to find a man. When they find a man, वो भाई ball lose कर देता है. Martinelli is actually looking okay. Martinelli is actually looking more decent. क्या ही बोलूं यार, कहते कुछ बोलने लायक है ही नहीं. इससे अच्छा, इससे ज्यादा एक्साइटिंग तो चैंपियंस की, मतलब चैंपियंस लीग में एक और मैच चल रहा है, बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड. वो है एक्चुअल मैच फिलहाल. दैट इज एक्चुअली अ गेम दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. वो दैट इज द रियल गेम राइट नाउ. दिस इज जस्ट एम्बैरेसिंग मैन, एम्बैरेसिंग टू वॉच.
अभी तो मजा तब आएगा जब नेक्स्ट सीजन garnacho आएगा आर्सेनल में। garnacho नहीं आ रहा भाई आर्सेनल में। सुशांत भाई कह रहे हैं मेरे रिलेटिव्स ने कोई पूजा रख दी संडे को 4 बजे, कोई मंत्र फूकने हैं आर्सेनल के लिए बता देना। मुझे तो पता है तुम क्या मंत्र फूकोगे, कोई नेगेटिव मत फूकना बस। अच्छे अच्छे फूकना। मैं तो सोच रहा हूँ गुरुद्वारे जाके सेवा करूँ, टू गेट अस सम फॉर्च्यून। वैसे सेवा तो काम होता है, लाइक इट्स नॉट सपोज टू, यू शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, ब्रिंग ऑन डाउन प्लीज आर्टेटा, व्हाई यू टॉर्चरिंग दीस फैंस। वो तो आपने सोचा था मैडवे के भी नहीं आए कभी, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैडवे का आया था मैं ठीक था, मैंने कहा कोई नहीं, आने दे मैडवे को, कोई बात नहीं। क्या करूं यार, मैं मर रहा हूँ, आई एम डाइंग, फकिंग डाइंग। समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को हो क्या रहा है मैच में। अच्छा हुआ अद्वैत अच्छा हुआ अद्वैत नहीं आया। अच्छा हुआ, कम से कम कल सुबह आराम से सुबह बैडमिंटन तो खेलने जा सकता है, खुशी खुशी बैडमिंटन खेलेगा, सेहत बनाएगा। वरना वो रात में आके मैं उसको बिठाता है यहाँ पे, बोलता है, नहीं मैच देख। सेकंड हाफ में आर्सेनल हैव टू वेक अप यार, दे हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट। इट डजंट लुक लाइक अ यूसीएल क्वार्टर फाइनल एट ऑल। पूरा ग्राउंड चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है भाई पूरा ग्राउंड। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, इट्स लाइक इट इज सो डेड भाई, इट इज सो डेड, द क्राउड इज सो डेड भाई, उनका खुद का ही मूड नहीं है। सिक्सर तो किसकी साइड है, सबको पता है किसकी साइड है भाई। इनको मैनेजर चेंज कर देना चाहिए था 1 मंथ पहले ही भाई, इतनी जल्दी नहीं हो पाता यार। बेकार गेम खिला रहा और बस प्लेयर्स इंजर्ड बोल देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो मत ही सुनो तो बेहतर है यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसकी इग्नोर ही करो तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। I want Arsenal to go deep in the UCL, help City win the league, so I'm supporting Arsenal। अच्छा, तू या मैं मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे? नहीं भाई, आज तो मैं द बॉयज देखूंगा एपिसोड 3, कोई स्पॉइल मत करना। अनुराग इज हियर, क्या हाल है अनुराग? कह रहा बेस्ट यूसीएल मेमोरी लास्ट ईयर्स मैड्रिड गेम, वर्स्ट यूसीएल मेमोरी इज एसी मिलान सेकंड लेग when Van Persie missed that chance to make 4-0 and 4-4 on aggregate, we won 3-0। Yes, I remember that। I think उस टाइम पे इब्राहिमोविच एंड केविन प्रिंस बोएटिंग खेलते थे for AC Milan, if I'm not mistaken। I remember watching that match quite well। I think उन्होंने जो विंग वाला एरिया थी वहां की घास वास काट दी थी, आई डोंट नो, ताकि बॉल तेज जाए, ताकि बॉल कोर्ट पकड़ना पाए उसको, आई डोंट नो क्या था वो, समथिंग समथिंग। लुइस एनरिके ले आना चाहिए था 1 मंथ पहले ही। अरे नहीं सॉरी, एमिरेट्स की बात कर रहे हो जब रोजिस्की ने पहला गोल मारा था। आई थिंक इन दैट फिक्चर रोजिस्की स्कोर्ड फर्स्ट and then others also scored and then Van Persie ने चांस मिस कर दिया था। आई थिंक एमिरेट्स की बात कर रहे हो। आई थिंक आई रिमेंबर दैट। लुइस एनरिके ले आना चाहिए था 1 महीने पहले ही। लुइस एनरिके कैसे आ जाएगा? लुइस एनरिके क्यों छोड़ेगा? पीएसजी को क्यों छोड़ेगा 1 महीने पहले भाई? क्राउड क्या करे, सबकी फटी पड़ी है इस टाइम, पता नहीं कब हक दे। सही बात। एंड बाय द वे स्पोर्टिंग डिड हिट द पोस्ट, तो वो गोल भी हो सकता था, वी कुड हैव बीन इन डायर स्ट्रेट्स। यूकेरेस का एक चांस मिला था उसको, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी हम उसे हक देते हैं। मैड्रिड बायर्न 5 गोल मार दिए फर्स्ट हाफ में। हाँ, देखा मैं मैड्रिड और बायर्न का गेम टीवी पे लगा हुआ है, एंड यहाँ पे आई एम वाचिंग आर्सेनल वर्सेस वो स्पोर्टिंग। थॉट्स ऑन टीसीएस स्कैंडल, क्या है स्कैंडल पहले ये बताओ। आई डोंट नो व्हाट स्कैंडल इट इज। यस, दैट सैन सीरो पिच, वी स्कोर्ड 3 goals in first 20। Percy missed one on one, he tried to dink it। Your best and worst? My best was when Arshavin scored that winning goal against Barcelona, and my worst memory was 8-2 against Manchester United, and that 4-all jab Czech Tiote equalized when we were 4-0 ahead at St James's Park, and then Newcastle scored 4 goals, and Czech Tiote scored a blinder and made it 4-4। Champions League में it has to be the second leg in that same fixture जब Arshavin 2-1 जीते थे, then Messi scored 4 goals in the second fixture, तो that was a not a very good memory। एक बार तो बच गए पोस्ट वाला, यस करेक्ट। आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा ना हो बस, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट भाई। खत्म करो ये गेम, एक गोल मारो खत्म करो। आज कॉर्नर सेट पीसेस भी हग रहे हैं यार, कॉर्नर एंड सेट पीसेस भी हग रहे हैं। मैड्रिड हैवंट क्रिएटेड एनीथिंग बाय द वे, एंड दे स्कोर्ड 3 goals। दे हैव क्रिएटेड,
आर्डा गुलर, चलो ठीक है, पहला मिस्टेक नॉयर का था, आर्डा गुलर स्कोर्ड, देन फ्री किक से आया उनका थर्ड वाला गोल तो उन्होंने खुद ही क्रिएट करा ना. थर्ड दे क्रिएटेड ऑन अ काउंटर when Vinicius passed it to Mbappe. That was a counter attack, so they did create a goal. ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं create करा. Oh man, the Newcastle goal, I actually switched off at halftime. Bhai, that was really bad. That was horrible. I did not expect it in my worst dreams कैसा हो जाएगा. Birmingham was also a bad जब हम Carabao Cup में थे against Birmingham. We lost 2-1 against them. That was bad. There have been quite a few bad memories. TCS HR arrested for trying to do religion conversion. यार ये सब ये बीपीओ कॉल सेंटर्स में ना ये आधे आधे पढ़े लिखे लोग आते हैं. आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट देयर आर लॉट ऑफ देम लाइक दैट. उनको लगता है कि मेरे को कंपनी ने हायर कर दिया तो मैं सबका बाप बन गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. And there are a lot of shady people working in the BPO industry. I must say, no disrespect. I know a lot of people who do work there. There are a lot of good people there, but there are a lot of shady people. Bhai. So many shady, downright sneaky, snitchy, icky people over there. I don't know. No, it was memory 6 against Chelsea. Oh yes, that too. That too. Prestigious occasion of Wenger's thousand game. Yes, that was also a very horrible memory. That wasn't free kick on second goal, and third goal was foul on Bayern player. Eh? I mean, they didn't give it. The game continued. भाई वैसे टीम वापस आ गई है. Didn't we also come back from 4-0 against Reading that ended 7-5? Yes, that was a good memory. That was a very good memory. It was a good memory. Worst memory has to be that Birmingham final when it seemed that trophy draw had ended and that motherfucker. Oh yes, oh yes, of course, of course. Birmingham was really bad. मैं और एडी साथ में वो मैच देख रहे थे बैठ के. आई थिंक 2011 का फाइनल था वो. 2011 का फाइनल था. Carabao Cup का. Jack Wilshere was there, young Koscielny was there, Almunia was there. और टीम आ गई. मैं अपनी कॉफी लेके आ रहा हूँ. 10 people watching है. स्ट्रीम को लाइक कर दो. रियली अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच. अगर आपने अब तक नहीं करा है स्ट्रीम को लाइक तो स्ट्रीम को लाइक कर दो. Also, you can follow me on Instagram if you wish. I make a lot of funny reels. That's what I do. I like to be funny. मेरी जिंदगी में एक ही मिशन है. If I don't make people laugh, then it's not a life worth living. I mean, I am still going to live, but it's a little less worth. Anyway, coffee लेके आ रहा हूँ. करो आर्सेनल. डू समथिंग. ये वाले बिस्किट्स किसको अच्छे लगते हैं गाइस? आई होप समडे दे स्पॉन्सर मी when I'm like 14. Arsenal with a chance early on in the game. Good cross from Eze. Arsenal starting strong. Arsenal last won the league in 2004, which was the invincible season. So 2014, 2024, 22 years, 22 years, not 30 years. League Cup in 30 years, yes. League Cup in 30 years. Been a very long time. Something like that. I don't even remember properly. No chance. Arsenal again. What a pathetic pass. Oh, counter attack from Sporting. Search movie Tuya Mai, good decent watch. Shania Kapoor is kissing Smiley. Okay. Tuya Mai on Netflix. ठीक है. I'll check it out. You get the ball back.
Both teams attacking. Chance. Oh, close chance for Sporting by 2004, 2005 Chelsea better than Arsenal Invincibles. I mean, I don't know. I don't think so. I would disagree with that. Arsenal Invincibles were really good. That's why they're called Invincibles, and that's why you call yourselves Chelsea 2004, 2005. They don't really have a name for that, do they? Yeah, Gabriel, what the hell? Come on. Nice, nice, nice. Oh, bye. Free kick. Will you swap the Invincibles for a Champions League? No, why would I? That's a historic thing, you know. UCL तो हर साल कोई ना कोई जीतता ही है. To do an Invincibles kind of a record is like rare, very, very rare. In the Premier League, तो super rare. Okay. Madueke do something. As they do something. Oof. Another shot deflected. नहीं 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 नहीं. Hit it really well, but just a little bit wide. Oh, bhai. Oh, my God. Bayern came so close, bhai. Bayern came so close. व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सोचा है. यार क्या करूंगा यार. व्हाट मैं बना लूंगा. बना सकता हूँ इफ यू गाइस वांट. एक बार डिस्कॉर्ड पे तो आ जाओ. पहले डिस्कॉर्ड बना हुआ है. व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूंगा. आई डोंट माइंड. बना सकता हूँ मैं. एक सेकंड. ये बहन का लोड़ा पैकेट खुल जाए पहले. मादर चोद. स्ट्रगलिंग with this packet like Arsenal struggles to score from open play. Oh, nice corner. रेयर है बट यूसीएल भी तो रेयर है. तभी तो आर्सेनल का जीरो है. इतना भी रेयर नहीं है. यूसीएल हर साल होता है. हम अभी यूसीएल ही देख रहे हैं. हर साल देखेंगे. अब क्या मतलब डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाने का मतलब. मुझे अच्छे लगते हैं. मेरे टेस्ट अच्छा लगता है. मैं हेल्थ के लिए नहीं खाता. नो नो नो. कॉर्नर फॉर आर्सेनल. स्ट्रेट टू द गोलकीपर. भाई व्हाट इज गोइंग ऑन भाई. टेस्ट अच्छा है. +1 ऑन दैट. यस. ओरियोज भी रखते थे बट आई वेंट विद डाइजेस्टिव बिकॉज कॉफी पी रहा हूँ. बिस्किट विद कॉफी फील्स नाइस. मैड्रिड फिर मारेगी. लेट्स सी.
कॉफी पियो में जोटा। सही है, सही है। एंजॉय। जमाना हो गया यार। डोंट इवन रिमेम्बर व्हाट इट फील्स लाइक। दीप भाई नमस्कार, हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हम लोग एक गोल की लीड पे कैसे निर्भर रह सकते हैं? भाई कोई इन्हीं से ही पूछे, इन सज्जनों से ही पूछा जाए ये सवाल का जवाब। मेरे को कोई बोल रहा था मैनेजर की देयर इज फायर इनसाइड हिम। भाई मेरे को पिच पे फायर तो नहीं दिख रहा है। आई सी अ वेरी स्टेल परफॉर्मेंस अगेन। मतलब पासिंग जैसी फॉरवर्ड पासिंग होती है, मतलब सब भूल जाते हैं पासिंग करना। This performance does not give me confidence from Manchester City. I genuinely can't believe what Arteta is doing with this team. I want someone to ask him once, what is your strategy actually to score? Great, great question. Pin करो इसको. Pin this fucking thing. ये ना मैच के बाद हम डिस्कस करेंगे इस सवाल को. This is a really, really good comment. Really good comment. You presented the words perfectly. How many touches that Victor Gyökeres have in the first half? How many touches does the goal scoring threat have? I mean, I'm sure in the entire match, David Raya has more touches than Victor Gyökeres in this game. City will eat you guys alive and will leave no crumbs. I agree 100%. Yeah, with this performance, they will expose us. They will expose us like nobody's business. Look at this. Forward passing करना ही नहीं आता है. Zubimendi has also forgotten how to do forward passing. Nobody knows how to pass the ball forward. They've forgotten it. They know how to pass it sideways, know how to pass it backwards, don't know how to pass it forwards. But this is shambolic. Kai Havertz is coming on, for whom I'm a little bit concerned. Don't tell me he's coming on for Victor Gyökeres. He's done nothing wrong. Nkapie, मुझे तो आज वाले गेम की भी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही. मेरे को भी नहीं आ रही दीप भाई. I am also not exactly getting a very okay. Madueke, something from Madueke. Okay. Oof, Martinelli over the crossbar. चलो कुछ तो हुआ. Something, finally something. Something, if nothing else. Good dribble from Madueke finally. Testing cross as a lays it up for Martinelli. Martinelli a bit too high. This Arteta lost to Pep in that cup final. He completely lost it from there on. I think so. I think it broke him mentally a little bit. I'll agree with that. सर अगर वो एक्चुअल पास डालना चाहता तो रिस्क देना पड़ता बट आर्टेटा हैज टोल्ड एवरीवन पास 1 feet बैक बट नॉट 2 feet फॉरवर्ड. ही हैज लिटरली स्टाइफल्ड एवरी प्लेयर. सो ट्रू. मतलब मेरे मन की बात यहाँ पे बोली जा रही है चैट में. आई 100% कंप्लीटली अग्री विद दैट. इट शोज. इट शोज. एंड जैसे ये लोग फॉरवर्ड पासिंग करना शुरू करते हैं ना, इनकी पासिंग एक्यूरेसी गिर जाती है. ग्रेट चांस. ओ माय गॉड भाई, मार्टिनेली को दे देता. चूतिए, मार्टिनेली को दे देता. यू आर ऑफ बैलेंस. दैट वाज द मोमेंट भाई. मैडवे के दैट वाज द मोमेंट. As soon as they start playing forward, they इनके passes इधर उधर pass, the weight of the pass is wrong. The direction of the pass is wrong. They're losing the ball out whenever they're passing forward. तो आर्टेटा कहता है कि आगे पास ही मत करो. But although that was a good run, but he should have laid it off to Martinelli भाई. He should have laid it off to Martinelli. He should have let Martinelli take that. भाई सच बोलूँ ना, sorry. Been watching football for 20 years, 20 plus. Never seen a team with this strategy. We have been shit for 2 months. We've been drab, stale, flat, uninspired. Substitution किसका हुआ? Oh my god! Again, as soon as they do a forward pass, they भाई भूल जाते हैं ये.
कि पास करते कैसे बॉल को। एक फॉरवर्ड पास, एक एक ढंग का फॉरवर्ड पास प्लीज। ये भी नहीं हुआ भाई। काय हैवर्ट्स ऑन द लेफ्ट विंग फॉर रीजंस अननोन। नहीं नहीं नहीं, काय हैवर्ट्स इस किसकी जगह लाए, जुबिमेंडी की जगह लाए, किसकी जगह लाए हैं? चलो फाइनली डेक्लन राइस। ओ योकेरेस इज कम ऑफ। व्हाई? हाय हाय माय गॉड। व्हाई डिड दे, योकेरेस ने क्या करा? योकेरेस डिड नथिंग। ही शुड हैव बीन स्टिल ऑन द पिच। अनबिलीवेबल। भाई सच बोलो ना, आर्सेनल की गेम देखने का अच्छा नहीं होता है, नींद आने लगती है भाई, तभी तो मैं दो दो स्ट्रॉन्ग कप कॉफी लेके बैठता हूँ। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। वरना तुम सोओगे और मैं भी सोऊंगा साथ में स्ट्रीम पर। होमलैंडर कह रहा है 2 months नहीं, you guys have been playing such football since the start of the season. I thought this football consistent for his ability it can't. नहीं, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स आ रहे थे, they were doing okay, they were still doing okay, they were beating teams like Bayern, like Inter, like Atletico, they were beating them soundly, ठीक है। But now they are not being able to do that. Sporting running around the pitch, finding their players way too easily. अब हम पीछे बैठ जाएंगे। I have a very bad feeling. I have a very very bad feeling that we're going to sit back now. Last minute Sporting equalizer coming. Oh ho. By the way, Bayern versus Real Madrid is also a very exciting game to watch. That could go into extra time, possibly. Sporting, good chance. Very good chance for Sporting. Okay. Madueke needs to run. Sporting have the ball back. Chance for Sporting. Corner to Sporting. Real Madrid chance. This is a shit performance, man. Another shit performance. Another day, another shit performance. Madueke has gone down, भाई। नी इशू लग रहा है कुछ। नीतू से कांटेक्ट में इंजरी हो जाती है क्या यार? ही ऑलरेडी हैड अ, इसको ऑलरेडी एक इंजरी थी पहले से। आई थिंक ही ऑलरेडी हैड एन इशू विद हिज नी। आई थिंक दैट माइट हैव बीन रिलैप्स। Should you have extra rest as well for the weekend? हाँ हाँ, I know, I'm well aware, very well aware. Time wasting तो नहीं है। He has an injury issue पहले से ही, and it's 61 minutes. Yeah, nobody's wasting time right now. Dauman is coming on by. Max Dauman is coming on. That's good news. I didn't agree with the notion of worst Premier League champions, but I'm sorry, I can't defend this. If we win, have you ever seen a fan base this agitated being 6 points on top? 2 points there.
uh, like, yeah, I think I see. I think I'll need to make a better statement on this comment, because there are two different aspects here. Agitated, 6 points on top, losing to Bournemouth, losing to Southampton, crashing out, and the kind of performances that we are giving on the pitch. That is one aspect. The second aspect is worst Premier League champions. Like, I wouldn't say the worst Premier League champions. I mean, I don't know. Like, we put ourselves in this position by playing good all season. But yeah, I mean, at the crucial stage of the season, we should be doing a lot better. Corner for Sporting, by the way. Oh no. Okay. No kick. Arsenal fans turning on Arteta. This is better than crack. Arteta again. Sorry, Raya again. Freak. Oof. Sporting dominating possession right now. Arsenal need to wake up as always. And come on, by do something. Play to Dauman and forget everything else. Even Arsenal fans recognize that Max Dauman is their best creative player, right? Max Dauman is a fan favorite right now. Like, कितने आराम से Sporting is keeping the ball. Arsenal once again back to their cautious. No one is pressing this guy by. No one is pressing. Push them back at least. थोड़ा सा पीछे तो push कर. थोड़ा सा push them back. थोड़ा सा pressure. Who is Havertz pointing at? Oh, I see what's happening here. See, this is where the game is going to be won and lost. 100%. Oh, come on. That's not a push. What are you talking about? He barely touched him. Musiala on for Bayern. Arteta is playing for a draw. Arteta पागल हो गया है आज दो सब कर दिया इतनी जल्दी आज. अरे नहीं नहीं नहीं. He's barely touched him. He's barely touched him by. You can see it from here. Okay, good punch from Raya. I missed the push, but I'm sure it's a spin. Sporting Rob nonsense. Come on, man, finish this tie. Come on, quicker, quicker, jaldi, thoda sa, get free. My God, nice, nice from Gabriel. थोड़ा सा जोश तो दिखा रहा है अब.
David Raya is the only player who passes the ball forward. Nice. Stick to your man. Play some football. Don't concede. Nice from David Raya. Good, truly very good defending from Martinelli. Dauman. Eze. Dauman again. Nice. Finally. Three passes strung together. Finally, why? Oh, good pass. Very good pass. This is what I'm talking about, bhai. This is what I'm talking about. Oh, taken it. गलत ले लिया. गलत ले लिया. Max Down is like a young Theo. What crap? What are you smoking, Sushant? What nonsense. No VAR sadly in UCL. ये किसने कह दिया? What are you talking about, bhai? How long has it been since you're playing in the UCL? There is VAR in the UCL. Feels very much like Bournemouth, where we believe we could never lose till we actually lost. Bayern Madrid neck to neck चल रहा है. Yes, I have that game also on. इतने फॉरवर्ड पास लास्ट मैच में देते तो हारते नहीं. आई एम ऑन फायर या 70 मिनट्स में नजर नहीं आया. 70 मिनट में नजर नहीं आया भाई. फाइनली इतनी देर बाद 68th मिनट में जाके दे एक्चुअली मेड वन गुड मूव. 68th मिनट में अभी when Eze and Dauman passed to each other, then Zubimendi passed it in the center to Declan Rice, and then he found Martinelli free on the left. That is the football I'm talking about. Why don't they play that more? Is what I'm begging. ये सवाल पूछता है मेरे को. And then we pass it back. This one move in the entire game was the best foot passage of play, according to me. Foul from Gabriel. कोई नहीं. दे दे. क्या हो गया? हाँ ये ले फायर. Oh my god. Arteta gets booked. Oh my god. Please calm the fuck down, Arteta, my guy. Arteta is on fire. He has moved more one touch than some of these. It's a yellow card for his fire. Come on. Keep pressing. Keep fighting for the ball. Keep fighting for the ball. Well done from by Dauman. Mosquera takes the throw in. Oh, bhai, Odise came so close. Yellow to Arteta. देखा मैंने. Quenda, my boy, come on, do it for your club. Quenda is on. Oh, nice. Yes, little bit more of this. Little rondo. Yeah, nice.
Now I don't want to see this shit after the game if it ends like this. That we were keeping our energy for the weekend. That's all excuses. No, no, no. I want them to fight. I want them to continue fighting. I want them to get the ball back. Yes, very well done, Zubimendi. Excellent. No one forward. No one forward. I give it to Dauman. Bhai. Should have just played it to Dauman. Like as a home advantage, lost last game, now drawing this one till now, and we were like, we have to play two to three more away games in Premier League. Yeah, I know what you're saying. I know what you're saying. अच्छा नहीं लग रहा है. It just feels scary. It feels scary कि कितना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है. Sporting defend the cross. Raya comes out, collects the ball easily, plays it out quickly to Mosquera, and Mosquera loses the ball immediately. Immediately loses the ball by. Fight for it, by. Fight, fight, fight. Martinelli's actually played well, but Martinelli's actually played really well. Oh, Mbappe could score. Oh, by how is Vinicius not finished? Boring nil. Gabriel Jesus is coming on for whom? Hincapié and Martinelli have actually looked good. Hincapié and Martinelli look good. Um, Zubimendi has been okay. Okay, okay. Declan Rice, the usual. Eze has been good. Eze को मत निकालो यार, please. Not Eze, please. कहा दिया मैं जा रहा हूँ सोने. एक और कॉर्नर. बायर्न मैड्रिड विल गो टू पेन्स. वैसे मैं देखता रहूंगा अगर जाता है तो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई मीन वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. Max Dauman taking the corner. Bring on Jesus. It's like playing with 10 men. दोनों टीम्स जिंदगी से हारी हुई टीम्स है. सेट पीस आफ्टर सेट पीस. कॉर्नर मिला है यार. दे जस्ट टेकिंग देयर कॉर्नर. गुड कॉर्नर. ओह, फाउल. फाउल ऑन द गोलकीपर. मैंने कुछ देखा तो नहीं वैसे, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट. गैब्रियल जीसस भी आ रहा है.
Keep the pressure on them and try and score the goal. Yes. और silly mistakes मत करना. Oh, very well done. Now, Daman should have passed. Right. Daman should have passed. Right. My God, how is that not? My referee should have given that. By referee should have given that. That was definitely he was pulling him back. By Trossard and Gabriel Jesus. By Martinelli को क्यों निकाल रहे हो? Don't tell me Martinelli को निकाल रहे हो. He's been one of our best players. I did not want to see the back of Martinelli. By and Eze. Oh no, I don't like this. बंदर की तरह क्या डांस कर रहा है आर्टेटा. Guess what? Quenda is going to be another Mudrik slash Madueke. Scored 3 goals in the last 5 games. That is embarrassing. अब तो कॉर्नर से भी होप नहीं लगती. कितना टाइम हो गया कॉर्नर से भाई. मार्टिनेली और ऐसे को नहीं निकालना चाहिए था यार मेरे हिसाब से. They were looking like creating pressure. हैवर्ट्स क्या ही खेल रहा है. अबे लेजी सा हो गया यार हैवर्ट्स. डाउमन. ओ भाई that has to be a foul. That has to be a bad foul भाई. Yellow card भाई. Oof. हैवर्ट्स थोड़ा सा लेजी लग रहा है भाई मेरे को. ओह अबे यार ले ऑफ कर देता. व्हाट इज दिस बैक हीलिंग नॉनसेंस मेरे भाई. इतनी मुश्किल से इट फेल्ट फॉर हिम एंड ही स्क्रूड इट अप. Well done from Max Trossard. Create. Olise almost. Olise is too good. Olise really is playing like Robin. I think better than Robin. I'll be very honest with you. Robin was he relied on a lot of space. Olise can play in tight spaces. I don't think Robin was that good in very tight spaces. He was good. Don't get me wrong. Really good, but Olise is really good. Like nobody can take the ball off of him. Olise is too good, by chance for Bayern, by the way. Oh, oh, bhai, Kane should have shot by shoot लेना चाहिए था Kane को. Pavlovich foul. Good pass. Oi, oi, bhai, communication is lost. Good communication. Cutting it. Yeah. I remember that goal against United where he scored directly off a corner and beat Van der Sar low on the right. That was insane. Madness.
Crazy, crazy goal. But yeah, he used to cut in really well. Like he was really, really good at that. And that was his signature move actually, more than anything. Olise and Musiala both are from Cobham. Chelsea have done war crimes for us fans. Martin Tyler भी मजाक उड़ा रहा है. Robin cutting in with that pace, dribbling, what a player. Really good. He used to play for Chelsea too, by the way, remember. Oh! Oh, we hit the post. What a header from Trossard. Oh, we came so close by near post, but Trossard tried to be smart and almost paid off. Get a goal, yeah. Keep this pressure up and just get a goal. Mm, wasteful from Saliba. Two Premier League with Chelsea. Oh, okay. In the box. Oi, oi, bhai. Him and Ribery on the two wings was very dangerous. That it was a different era of football there. I remember 2010 के final maybe he had this great chance to put Netherlands ahead against Spain. He was one on one against Casillas and Casillas ने पैरों से save कर दिया था. Trinca was off. Rafael Nel and Vagianidis is on. So two players have come on. Par hit, yeah, twice now. Twice, right? Twice. Oh, bhai. Come on, keep this pressure on. Mm, just keep your focus and counter attack again. Get a goal. अरे उस हैवर्ट्स नहीं भाग पाता है यार हैवर्ट्स के पास पेस नहीं है बिल्कुल भी पेस नहीं है हैवर्ट्स जस्ट डज नॉट हैव पेस भाई वो ऐसा प्लेयर है ही नहीं जो भाग सके इट इज हिज वीकनेस एक्चुअली पेस इज हैवर्ट्स का वीकनेस सेम गोज फॉर कपल ऑफ अदर प्लेयर्स हैवर्ट्स का है टू होल्ड द बॉल यूजुअली उसका वही है उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट ओ पास पास अबे कम्युनिकेट गाइस गुड कम्युनिकेट भाई ऐसे थोड़ी ना
ट्रॉसार्ड पे क्यों चिल्ला रही है? ट्रॉसार्ड ढंग का तो खेलना था। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर्टेटा इज येलिंग एट हिम। आर्टेटा येलो लेग्स बेंच पे फिर से लगता है। आई डोंट नो व्हाई ही इज येलिंग एट ट्रॉसार्ड यार, नॉट एट दिस स्टेज ऑफ द गेम भाई। यू डिमोरलाइजिंग योर ओन प्लेयर बेमतलब। हम्म। Dowman, not a good pass. Chalo, time to counter. We don't have anybody who can counter. We don't have legs up front by. Ateta ball le ja tu hi gar. This is why Ateta is so disliked. He thinks of himself in such high regard. He thinks he's already a pep without even winning anything and takes. I'm not going to. Must be something very important that he had to say. I don't know what exactly it was. By Real Madrid red card. Real Madrid red card. Oh, Trossard loses out. Arsenal ball. 4 मिनट का stoppages. रियल मैड्रिड का रेड कार्ड किसको मिला? कॉर्नर भाई। कैमाविंगा रेड कार्ड, माय गॉड। कैमाविंगा रेड कार्ड मिल गया भाई। सो कॉल्ड नेक्स्ट कांटे। कांटे तो इज वंस वन इन अ मिलियन। कांटे इज another horrible corner भाई। what the fuck are we doing with the corners today? उसको क्यों रेड मिलना चाहिए भाई? oh, nice। into sporting set pieces not working out, god truly is watching। अरे कॉर्नर किक ही अजीब सी ली इसने। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। बायर्न हैव स्कोर्ड भाई। बायर्न आर गोइंग थ्रू। रियल मैड्रिड आर गेटिंग नॉक्ड आउट। माय गॉड। Luis Diaz has scored for Bayern। Wow।
Bayern going through, I think. Trossard, यार. What a goal by Diaz, भाई. Ah, बॉर्जेस को भी मिल गया येलो. Oh, side netting, corner, जीत गए. Embarrassing win. Ah, 6 goals versus zero. Oh my god! I don't think I should be, you know, leaping with joy over this result. That's all that it is. It is Martin Tyler भी सही कह रहा है. It is just enough. चलो जीत गए. But we have to do better. जीत गए but have to do better. I mean, I swear. I could not have, अगर ये chat नहीं होती ना यहाँ पे, I could not have sit down and watch this game. Hmm. Although I will give a positive spin on one thing. In the second half, game थोड़ा सा change हुआ, but in the first half, the game was completely dead. Second half, slightly the game changed. They started making more progressive passes. They started coming out of their shells, and that is what I really, really wanted from them. So second half was far, far better than what the first half performance was. इतना तो मैं मानूंगा. Where the fact that we didn't get a goal, Trossard hit the bar. Uh, बायन और रियाल का अभी भी चल रहा है. आई सॉ दैट बाय द वे. मैं डेक्लन राइस का एक्सप्रेशन देख के लग नहीं रहा था कि he's particularly enthusiastic or oh bhai, what a goal from Olise, bhai, what a goal from Olise. My god, that is world class. Guys, if you haven't seen Olise's goal right now, that is a world class goal. That is a world class goal. That is goal on, my god, bhai. मेरी मर्जी का गोल. What a goal. What an amazing goal. That is more than world class. You cannot imagine how difficult that is to do. How easily he scored that goal. By khatam, the game is over. Referee has blown the whistle.
Bayern are through. Real Madrid fought, but they are out. Damn. क्या ही बोलूं मैं. Real Madrid fighting with the ref. भाई साहब. भाई what a खतरनाक goal by Michael Olise यार. रेड कार्ड किसको मिला? आर्डा गुलर को रेड कार्ड मिल गया. रेड कार्ड फॉर आर्डा गुलर. नॉट नॉट अ वेरी हैप्पी टीम. क्या व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द रील आई शुड मेक? मैं यहीं बैठ के रिकॉर्ड कर लेता हूँ. नहीं, व्हाई नॉट? यहीं बैठ के रील रिकॉर्ड कर लेते हैं बिकॉज आई मीन आई डोंट इवन नो हाउ टू एनालाइज द गेम भाई. इट वाज रियली वीक. एक सेकंड, मैं दूसरा वाला लगाता हूँ. मैं स्टैट्स देखना किसी को. इज एनीवन इंटरेस्टेड? चैट्स ले लेता हूँ मैं. ओलिसे ने ले लिया आज रियल मैड्रिड की. ही डिजर्व्स दिस. इट वाज कमिंग. Positive for me was like in last minute we at least attack rather than sitting back, which we usually do. Thank you. Yes, very true. मेरा डर था that Arteta is now going to sit back and वो comfortable हो जाएगा in the fixture, and that is exactly what I did not want. तो I'm glad कि वो नहीं हुआ. I'm glad कि they came out and they attacked. But जब भी हम forward जाते हैं we look very weak यार. वो नहीं बदला है. जब भी हम forward जाते हैं we don't look like we're playing like we're one of the like so-called best teams in the world. Not a chance. Not even close. 0.6 xg and one shot on target. That is horrendous. That is horrendous भाई. भाई मेरे को तो एथलेटिको अगेंस्ट भी नहीं चांस लग रहा है यार. मेरे को बिल्कुल नहीं चांस लग रहा है एथलेटिको अगेंस्ट. We had 15 shots in total. One shot on. क्या? What is this fort mob bullshit? Uh, Okay, so our XG was 0.64 against their 0.29. Total shots we had 15. One shot on target, one big chance missed. Not great. Not great at all. XG of 0.64, 0.48, 0.16, 0.64. हाँ तो यही था भाई. यही था. कंपनी रिएक्शन. हाँ भाई. टू ही इज दैट. वो कौन सा मीम था? दैट चिल गाय. वो जो डॉग फेस होता है. ही इज जस्ट चिल. कंपनी वाज लाइक दैट. सिटी पेल देगी संडे को. तू आया क्यों नहीं हरामखोर? तेरे को तो बैडमिंटन खेलने जाना है ना. तेरे को बैडमिंटन खेलने नहीं जाना था सुबह सुबह? तू क्या कह रहा था? तू स्ट्रीम पे ही आ जाता. इतनी इतनी सुबह तक तू उठा हुआ 2:30 बजे. स्ट्रीम पर ही आ जाता. Mikel Osama, Taliban football. What crybabies, Madrid players. I am going triple city attack. Semenyo, Cherky, Haaland on free hit. Triple city attack. Wow. Wow भाई. ठीक है. फाइन. अभी FPL की स्ट्रीम भी करेंगे. We'll do that on Friday. Not tomorrow. We'll do that Friday. आज तो Thursday है. आज देखते हैं क्या करना है. I don't really know what to do exactly. अभी उठा और स्कोर देखा. हाँ मैं पता है क्या करने के लिए उठा है तू. सिटी की लास्ट टाइम फटी पड़ी थी आर्सेनल के अगेंस्ट लीग मैच में. आई डोंट थिंक इस बार उनकी फटी पड़ी होगी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. लास्ट टाइम ठीक है फटी पड़ी थी. इस बार मेरे को नहीं लगता फटी पड़ी थी. मिला ना उसको येलो कार्ड. मिला ना उसको. फायर. वेयर द फायर भाई. ही इज जस्ट गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन ही इज गोइंग टू सॉल्व एट दिस रेट. He's going to say a lot of things in the press conference. We are in the, by the way, good news. Arsenal are in the UEFA Champions League semi-finals for the second year in a row. That is good news. That is good positive news. We're going to be facing Atletico Madrid. The first game is going to be at the Metropolitano Stadium and the second game is going to be at the Emirates Stadium. So that is something to look forward to. Still, ठीक है, it is something to play for. There's something to play for there. I mean, this game is dead.
You beat Sporting 1-0 aggregate over two legs. It's just so sad. The same team हमने league stages में इनको 4-0 हराया था. We beat them 4-0 in the league stages, and now uh, in the quarterfinals, it's just not really good. Bhai. I feel so confident going up against Manchester City, said no Arsenal fan. I swear. Well, it has never ever happened. In the longest time, it has never ever happened. That we are going to go in a game against Manchester City, Pep's Manchester City with full confidence कि हाँ हो जाएगा. Bro, क्या लगता है सेमी में क्या होगा? मुझे क्या पता. अगर अगर ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे और ये परफॉर्मेंस होगी तो भाई तुम भी जवाब जानते हो, मैं भी जवाब जानता हूँ. ठीक है. दिस इज एन एटलेटिको मैड्रिड जो बार्सिलोना को हरा कर आ रही है 2-0 उनके कैंप नाउ पे, एंड देन 2-1 हार गई, बट स्टिल दे बीट देम 2-0 देयर. तो मतलब दे आर द टीम दैट इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग गोल्स, इतना मान लेते हैं, चाहे कितना हराम बहुत खेलती है, जो भी करती है. ठीक है. दे मैनेज टू कीप बार्सिलोना आउट. ठीक है. मैनेज टू कंटेन बार्सिलोना का अटैक. तो हमारा तो अटैक ही नहीं है. I think 0-0 over two legs and the match goes to penalties. क्या लगता है guys? Any takers? I think Atletico versus Arsenal 0-0 both legs, match goes to penalties. And penalties, who knows what happens. So that is my expert analysis कि क्या होगा उस मैच में. First time in our history we are in semi-finals back-to-back seasons. I mean, when you put it like that, it's a historic performance. I mean, पता है क्या, I was hoping for something, like especially देखो, and पता है क्या, I'll be very honest with you. Arteta अगर ये सब नहीं बोलता ना, फायर वायर वाली बातें ये सब नहीं करता, I would have been like ठीक है 0-0 हार गए, ठीक है निकाल लिया इसने, ठीक है मैच. वो बोल रहा था, उसने पहले बोला वो कि नहीं भाई, we will fire, आग लगा देंगे हम भाई, देखना. तो शांति भाई, शांति. पूरे स्टेडियम में फर्स्ट हाफ में बिल्कुल शांति थी. हाफ टाइम की विसल बजी, शांति. You could have you heard a mouse squeak. इतनी शांति थी. And then second half में they picked it up. Second half the performance was a little better. I was worried कि वो they'll sit in their box and they'll defend the entire game. Thankfully they did not do that. वो गए उनके हाफ में, उन पे प्रेशर डाला, and that is what I needed from this team, especially in the second half. First time in your history you will lose back to back semis. अरे क्या यार मैटर. सेमीज खेल तो रहे हैं, तुम लोग कहाँ, वेयर आर यू? celebrating you guys are celebrating your team's loss against a rival. ये तो तुम्हारी हालत है. ठीक है. Like हम तो we are talking about bad football, right? You guys are in like complete disarray from top to bottom. तो हमारा तो बस bad football is the issue. I mean, hopefully we fix that, but ये परफॉर्मेंस अगर हम सिटी के अगेंस्ट देंगे, देन किस द प्रीमियर लीग गुड बाय. किस इट गुड बाय, ऑनेस्टली. Imagine the plight of fans who pay to go watch this in the stadium, 100 200 pounds, and you come out after a 0-0 in the UCL quarterfinals. At least they get to sing North London forever in the ground. I'm sure it's a nice ground to go to. But 100 200 pounds is way too much. हम खत्म है, पर ट्रॉफीज तो 0-0 ही होंगी दोनों की. केवी ब्रो, nah, I don't think so. I think we'll do something. And let's not compare where you guys are struggling to get into Champions League football, and we've pretty much, like it is confirmed that वो तो होएगा ही. But what a game! दूसरा गेम भी कितना खतरनाक था between Bayern and Real Madrid भाई. What a game that was. The team who bored the UCL. अरे Vex, oh knockout हो गया. So sad. कोई नहीं भाई, कोई नहीं. You tried at least. You tried really hard, really well. Bayern versus Real Madrid. अभी मेरे को I think दो रील काटनी पड़ेंगी. एक तो कि how boring Arsenal's game was. Snowed into the semis. And the other, भाई माइकल ओलिसे पे रील काटनी पड़ेगी यार.
होमलैंडर गानाचो ने चेल्सी पिक्स हटा ली सोशल मीडिया से. इट बिगिंस. क्या क्या पिक्स हटा ली? आई डू नॉट नो द रेलेवेंस ऑफ दिस. आई डू नॉट नो कि उसने कौन सी पिक्स हटाई है, क्या हटाया है. भाई कैमाविंगा रेड कार्ड वाज द गेम चेंजर भाई. कैमाविंगा रेड कार्ड वाज डेफिनेटली द गेम चेंजर. 100%. अच्छा, तो उसको बॉल डिले करने के चक्कर में मिला था क्या रेड कार्ड? दैट इज क्रेजी यार. इट्स सच अ बिग गेम, उसको इस चीज के ऊपर रेड कार्ड मिला है. दैट इज अ लिटिल बिट नट्स इफ यू आस्क मी. दैट सीम्स लाइक अ लिटिल बिट अनफेयर, पर अब तो हो गया खत्म. गर्नाचो की माँ की चूत, ही शुड बी सोल्ड इन द समर, नेवर वांटेड हिम एट द क्लब. पर हुआ क्या? व्हाट इज द रेफरेंस? मेरे को रेफरेंस तो बताओ इस चीज का क्या है. मेरे को भी तो समझाओ. माय गॉड. एक सेकंड, एक दो चीजें चेंज कर देता हूँ. टिप टिप टिप. Hmm. Would you say Sunday's game is the biggest in Arsenal's history? Where have I heard this? I think I've heard this somewhere. It's some pundit has said this, na, that this it's the biggest game in our history. I would say that every single game starting from Sunday is the biggest game in our history, in our modern history, since 2004. Every single game since from Sunday, including the UCL games that we're going to be playing, including the games that we're going to play against Newcastle United, is going to be very, very important, or the biggest game in our history. 2 से 3 हफ्ते पहले ही हटा दी उसने फोटोज. इज जस्ट Garnacho showing why he will not become a successful footballer at any club, his usual antics. Maybe he'll just go to Saudi eventually, make his money, and like just पैसा वैसा बनाओ, पतली गली से निकलो. Maybe he's not that ambitious. Who knows? Barca UCL final was Arsenal's biggest game. Yeah, it was definitely, it was 100%. I missed that game. यूनाइटेड के बाद सबसे ज्यादा किसके फैंस हैं इंडिया में प्रीमियर लीग टीम्स में? आई थिंक लिवरपूल के हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैं सबसे ज्यादा. मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल सेकंड हाईएस्ट, चेल्सी थर्ड हाईएस्ट, आर्सेनल फोर्थ हाईएस्ट, एंड मैनचेस्टर सिटी. आई थिंक दैट्स व्हाट इट सेज. इंडियन सपोर्टर्स. हाँ, यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल. That's what it is. Apparently, I mean, I am not going to verify this, but यहाँ पे लिखा तो यही है. But if we win on Sunday, imagine me saying this right now, but if we do, the title race is over. We would need to lose almost 3 games in the last 4 games. That's not happening. If we win Sunday, it's done. Let's calculate that, shall we? So let's say we win. Okay. We will have a 9 point gap, right? A 9 point gap, and they will have one game in hand, correct? So let's say they equalize and they win that game. Okay. Then they have no game in hand and 6 points.
which means we need to lose two. We need to lose two games out of the remaining five. Uh, out of the remaining five. So yeah, this list is shit. एक सेकंड स्पर्स के फैंस अभी आ रहे हैं यार. आई मीन पहले तो मेरे को नहीं पता था, बट हैं, दे डेफिनेटली देयर. I can attest to that. I've seen them. This list is shit. Chelsea can't be above Arsenal. It's United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Spurs, I would say, and then City. United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Spurs, and then City. I don't know, man. I don't know. Like I Spurs and City ka, like it's more like they like dormant. आते हैं जाते हैं कुछ पता नहीं रहता. Creators तो I know Utkarsh and Adit I know. They're both creators. Lily White's is a good creator. City के इतने सारे हैं. आपका अभिषेक है. Obviously Piyush bhai. Let's talk City. Manas City. Pranay bhai. Pranay TFB. Tackle from behind. Manchester City fan. So a lot of City creators, a lot of City fans. और भी होंगे. I'm sure I'm forgetting something. A lot of female content creators also as well. But fans का I don't know. You know, they come and go at times. पता नहीं रहता मेरे को इतना. I was Beerus, what's up, bhai? Kaisa? I was watching the better and one of the best games this season. Real Madrid was banned. I didn't even think about this fixture. I knew Arsenal parked the asteroid. 0-0. What a fucking disgrace. I really hope Atletico wins. They deserve to go to finals. ठीक है भाई. You all win the league at least this season. Congratulations. Chelsea is above Anurag. Just go and check on any AI or Google, or just go out in the country and check for yourself. Chelsea have more fans than Arsenal in India. पता है क्यों? Because Chelsea's rise started during the social media rise, like side by side. Don't even try to deny this. It has a big factor in Chelsea having more fans. Otherwise, before Jose Mourinho, I don't remember Chelsea having a lot of fans in India. Not at all. Can we beat Atletico Madrid in semi-final? Of course we can. Of course we can. We have beaten them in the league stages. We just have to figure out a way how. And I don't think Arteta's current tactics have any clear indication कि भाई उसको तरीका पता है हराने का. उसको उसको गोल मारना नहीं आता यार. How are we going to score? Both teams can park the bus when they get a goal. What a come on, Gabriel. Even you know Chelsea have more fans than Arsenal in the country. I mean, I just read it out. उसमें लिखा हुआ था, तो I'm believing what that said. So I'm not even denying it. But I'm saying why Chelsea have more fans. I'm just saying that. Chelsea जब ट्रॉफीज जीतना शुरू करा तो उस टाइम पे सोशल मीडिया भी बढ़ने लग गया. एंड देन you know everybody started getting interested in Chelsea and people started following Chelsea slowly through social media. Quite a lot of people from India. Not in 2004, but I think 2007 से तो था. 2006 2007 से तो था. 2004 में इंटरनेट था बट सोशल मीडिया नहीं था. 2004 में आई थिंक इट जस्ट स्टार्टेड. व्हाट्सअप के भाई कैसा चल रहा है लाइफ? बहुत दिन हो गए आप लाइव नहीं आए. क्या बात कर रहा है? आज मैंने दिन में दिन सुबह मैंने एक स्ट्रीम करी, ठीक है, फिर दोपहर में एक स्ट्रीम करी गेमिंग चैनल पे, फिर अभी रात में एक स्ट्रीम कर रहा हूँ. उसके बाद मैंने 2 रीलें अपलोड करी. कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने 5 अपलोड्स करे आज. 5 5 5 सॉरी. मैच देख के मेरा दिमाग खराब हो गया. सॉरी 5 अपलोड करे, 2 रील और 3 लाइव स्ट्रीम आज के दिन. सोच. और तू कह रहा है कि मैं लाइव नहीं आता. सो बैड. Can we change manager at this point? Can we take risk? No भाई, we can't change manager. भाई वो बस का ड्राइवर थोड़ी ना है कि हाँ इसको हटा दो, अब हाईवे पे गाड़ी चलानी है या पहाड़ों पे गाड़ी चलानी है, दूसरे ड्राइवर को ला के रख देते हैं. ऐसे थोड़ी ना होता है यार. No more Arsenal fans, I think now. Arsenal fans काफी कम हो गए हैं. I will agree on that. Arsenal fans have reduced. जितने भी Arsenal fans मैं जानता हूँ ना, they're my age or they're at least 25 above from what I know. जहां तक मेरे को पता है जो आर्सेनल फैंस है बड़े पुराने से हैं. लाइक कभी कभी बाहर आते हैं. लाइक यंग आर्सेनल फैंस थोड़े से कम हो गए हैं.
खत्म नहीं हुए हैं बट कम डेफिनेटली हो गए आफ्टर टुडे. Hamlata Keller, with that argument, a whole lot of Arsenal fans have popped up as well since 2022. Before that, I can't really remember so many Arsenal fans being this active on social media. इंडिया की ही बात कर रहे हैं या फिर are we talking overall? Because अगर आप अफ्रीका में जाओगे तो अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ आर्सेनल फैंस भरे पड़े. ये मैं बता देता हूँ. There are massive number of Arsenal fans in Africa and in the US and in Canada also. काफी सारे Arsenal fans हैं. And in Southeast Asia also, Indonesia, Singapore वगैरह, there are a lot of Arsenal fans. South Korea तो भरा पड़ा है Spurs fans के साथ. इंडोनेशिया में भी, सिंगापुर में भी स्पर्स फैंस काफी सारे हैं, बट आर्सेनल फैंस भी हैं. हाउ डज दैट इवन मैटर वैसे? लाइक एनीवन कैन सपोर्ट एनीवन दे वांट, राइट? यहाँ पे आईपीएल कौन कौन सपोर्ट करता है? मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करता हूँ. दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन आवर लोकल प्रेफरेंस. एंड देन और कोई टीम है एनएफएल में देखता हूँ कभी कभी. आई सपोर्ट बफलो बिल्स. आई एम प्रीटी श्योर नन ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट. एनबीए में कौन किसको सपोर्ट करता है? किसी को नोबडी हैज एनी आइडिया. उनके इतने सारे प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं कौन कहाँ रहेगा किस टाइम तक. 35 का मैं अगले महीने हो जाऊंगा गाइस. मेरा बर्थडे आने वाला है. होपफुली हम सेमीफाइनल खेल रहे होंगे उस दिन. होपफुली भगवान. 5 मई की रात को. तो आई थिंक सेकेंड लेग होगा सेमीफाइनल का उस दिन. प्लीज 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 क्वालिफाई करवा देना. मेरे बर्थडे के दिन तो क्वालिफाई करवा देना ब्रो. आर्सेनल थिंक्स स्पर्स को उतना एक ट्रॉफी है. इट्स इरिटेटिंग ना. स्पर्स का इतना वैल्यू नहीं है. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड तो है ही ऑब्वियसली. यस, ओनली इंडिया ग्लोबली फैंस आर मोर लॉयल. फेयर फेयर. ट्रॉफीज के लिए जाओ एंड विन ट्रॉफीज. अग्रीड भाई, अग्रीड. अगर ट्रॉफीज जीतेंगे ना फैंस बढ़ जाएंगे अपने आप. देखना, मैं कह रहा हूँ तुमको, लिख के दे रहा हूँ. लिख के दे रहा हूँ मैं. जो टीम जितनी ट्रॉफीज जिस हिसाब से जीतती है ना, उतने उनके फैंस बढ़ते रहते हैं. इट इज लाइक साइंस. इट इज साइंस. देयर आर नो डॉटमंड फैंस. डॉटमंड इतनी बढ़िया टीम है, but there aren't that many Dortmund fans in India, or that many overall. Very very few. यश मेरे भाई, व्हाट्सअप क्या हाल है भाई? लेट्स गो सेमीज भाई. हमारे बर्थडेज पे गाइस, यश और मेरे बर्थडेज पे सेमीफाइनल्स होंगे. आई थिंक फर्स्ट लेग यश के बर्थडे पे होएगा, तो मैं उसकी स्ट्रीम पे 100% जाऊंगा अगर वो बुलाएगा तो. ऑब्वियसली बुलाएगा. एंड हम पार्टी करेंगे उस दिन. एंड फिर अगले सेकंड लेग में मेरे उस पे हम प्लान कर लेंगे. अभी हमने प्लान नहीं करा है कुछ भी. अभी पहले सिटी वाला गेम हो जाने दो, देखते क्या होता है उसमें. पर हाँ, क्योंकि अब सेमीफाइनल्स कंफर्म हो ही गया है, तो वी कैन एटलीस्ट डू दैट मच. एटलीस्ट एंजॉय योरसेल्फ. मौज आ गई भाई. सोने वाला था मैं. आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप. एंड बाकी चैट भी सोने ही वाली थी. बिल्कुल. नील नील में मजा कैसे आ सकता है यार? कैसी बातें कर रहा है? मैं सीएसके को सपोर्ट करता था. ओह नाइस. व्हाई डू यू सपोर्ट राजस्थान रॉयल्स, अनदर टीम दैट हैजंट वन द लीग इन 2 decades? भाई जब आईपीएल चालू हुआ था तो आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल इन अजमेर. तो हम सब ने बैठ के टीवी पे सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स को देखा था. एंड बिकॉज आई वाज इन अजमेर राजस्थान, एंड मैं राजस्थान के लिए खेला भी हुआ हूँ, तो आई वाज लाइक राजस्थान इज द टीम दैट वी शुड सपोर्ट. आई मीन आई नो कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है, और आरसीबी विजय माल्या की टीम थी उस टाइम पे, एंड बड़े बड़े नाम इधर उधर ब्ला 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 व्हाटएवर तो आई वाज लाइक यार अपनी लोकल टीम है, लोकल टीम को सपोर्ट करते हैं. उसके बाद से आई हैव नेवर चेंज. आई एम द काइंड ऑफ गाय, मैं एक बार एक टीम पकड़ लेता हूँ ना, देन आई डोंट चेंज. लाइक ले लिया, अब ये डूब जाए ये टीम, आई विल सपोर्ट द टीम, कोई बात नहीं. इट इज व्हाट इट इज. अक्षय व्हाट्सअप. अक्षय कह रहा है बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स को सपोर्ट करता है जस्ट कॉज दे आर पिंक. हल्ला बोल. लेट्स गो भाई, लेट्स गो. मेरी कॉफी नहीं खत्म हुई अब तक. बताओ, अब मैं कॉफी पीऊंगा रात के 3 बजे. थैंक्स टू दिस आर्सेनल टीम. एंड आई मिस्ड अ फकिंग बैंगर ऑफ अ गेम बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बायर्न. ऑल्दो मैं टीवी पे लगा रखा था, बट आई वाज मोर कंसर्न्ड कि यहाँ पे कहीं गोल ना खा जाए. बट चलो ठीक है, कोई नहीं. हार्ड लक फॉर रियल मैड्रिड. देखो कितनी अच्छी अच्छी टीम्स who deserve to be in the final are not going to play in the final. Sucks to be them. Oh. Ah. United, Chelsea, Liverpool fans will cry now. Boring game था. Oh, नहीं नहीं नहीं. I don't think they will waste their time talking about the Arsenal Sporting game. They are they are going to talk about the Bayern versus Real Madrid game without a doubt. Without a doubt, that was the game to talk about. Arsenal versus Sporting was not a game worth being mentioned.
at the side of a game like Bayern versus Real. That was a blockbuster game, a blockbuster fixture that lived up to the hype. In fact, that is what I should say in the reel. रुको, मैं दिखाता हूँ रील कैसे बनाते हैं. ये देखना अभी. अबे नहीं यार, मेरे को लाइटिंग चाहिए अच्छी. गुड लाइटिंग. मेरे बाल भी अच्छे नहीं है. रुको रुको. Might as well ना, we're living that social media content creator life, तो might as well show you guys कि guys रील कैसे बनाते हैं. And guys please Instagram पे जरूर फॉलो करना, ये रील वहां पे आएगी. स्मार्ट ही लग रहा हूँ मैं. Doesn't really matter. लोग लोग सो के उठते हैं और रील बना देते हैं. Guys, Bayern Munich versus Real Madrid was a blockbuster of a fixture. भाई दोस्तों, इतना खतरनाक गेम. I mean, Michael Olise, what a performance, bhai. He absolutely smashed. And this fixture has lived up to the hype that everybody was hoping कि भाई इस गेम से तो अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा. Feel a little bit sad for Real Madrid. उन्होंने remontada करने की कोशिश करी, but at the end of it, it was not enough. I think the Camavinga red card, I feel was a little bit undeserved, but एक बार वो red card मिल गया था and the game completely changed. So hard luck for Real Madrid. I really feel for their fans, but very well done Bayern Munich. वो लगे रहे, even though Arda Güler had a fantastic performance. Mistake by Manuel Neuer very early on in the game, and then again a wonderful free kick from the young lad. But guys, it is going to be PSG versus Bayern in the semi-finals, and on the other hand, it is going to be once again the haram ball derby, Atletico Madrid versus Arsenal very soon. It was a horrible reel, by the way. It was a horrible reel. मैं इतना अटक अटक के बोल रहा था. कई कई बार तो मैं 4-5 बार रिकॉर्ड करता हूँ एंड देन आई एम नॉट सैटिस्फाइड, तो मैं डिलीट करके छोड़ देता हूँ. अरे यार, द बॉयज एपिसोड 3 देखना है मेरे को. अभी थोड़ा मैं तुम लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूँ, फिर करूंगा. मैं एनएफएल में बंगाल टाइगर्स बेंगल्स, नॉट बंगाल टाइगर्स, बेंगल्स होते हैं वो. सिंसिनाटी बेंगल्स है वो. कांग्रेट्स के भाई, थैंक यू सो मच अक्षय. क्या बात कर रहे हो, मेरा भी 5 मई को है बर्थडे. लेट्स गो भाई, पार्टी करेंगे 5 मई को. 5 मई को पार्टी करेंगे. अरे केवी भाई, कर तो लिया क्वालिफाई. भाई पर यश यार, आग, वेयर वाज द फायर? आई डिड नॉट सी एनी फायर भाई. यार ये तो बहुत ही गंदी रील कट के आई है यार. मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ इसमें. मेरा फोन इतना गर्म क्यों हो रहा है? चार्जर खराब है क्या? एथलेटिको मैड्रिड आपके अगेंस्ट बस पार्क नहीं करेगी, और हम भी नहीं करेंगे. मजा आएगा. स्पर्स को हारना बस यही मोटिव है इनका हर सीजन. हराना बस यही मोटिव है इनका. अच्छा. सिर्फ ट्रॉफीज के लिए किसी टीम को सपोर्ट नहीं करते. बर्थडे बैश होगा विद सिमियोने. भाई मजा आएगा, मौज आ जाएगी. के भाई भाई पार्टी करेंगे फुल. मैं कह रहा हूँ तेरे को, बहुत मजे करेंगे. होमलैंड कह रहा है अक्षय तो मत कर भाई यूनाइटेड को सपोर्ट. यूनाइटेड ये तो जीती ही नहीं ना ट्रॉफीज. लड़ने लग गए आपस में. यस कह रहा है सेमी में ना सिटी आई, ना लिवरपूल, ना चेल्सी, ना मैड्रिड, ना बार्सिलोना, ना स्पर्स. बड़ी बात है सेमी में आना. लगातार आप डाउन हो समझ रहा, पर आर्सेनल फैन शुड बी प्राउड, वी आर इन सेमीज अगेन. क्या हो गया इसको? तूने क्या अपना मूड फिक्स करने के लिए दवाई ले लिया क्या? कुछ कुछ तो तूने दवाई शवाई लिया तूने, मेरे को ऐसा लग रहा है. बट yes man, a second season in a row consecutively we are in the semi-finals, so feeling very happy for that. Yes, you know कि भाई, we know we can tell Arsenal को जो support कर सकते हैं वो loyal है. Yes, yes, true, very true. मैंने जब से यूनाइटेड को देखना शुरू करा, उन्होंने गिन के, सॉरी मेरे को GIN जब कोई लिखता है मेरे को जिन मैं जिन पढ़ता हूँ उसको. गिन के 4 ट्रॉफीज जीती है. सॉरी. Imagine doing all this just to get beaten by Atletico. हाँ, very sad. By the way, real quality is so low 360p. क्या फोन वाली या फिर जो मैं इस पे अपलोड करता हूँ? हाँ यार, वो मेरे को आई नीड टू फिक्स समथिंग अबाउट दैट. कुछ तो है उसमें गड़बड़. आई नीड टू सॉर्ट दैट आउट. मिया सान मिया, डेविड जेम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस. व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ गेम. छी रील भाई, इट वाज अ बैड रील. मैं इसको, आई एम नॉट गोना अपलोड दिस रील डज नॉट डिजर्व टू गेट अपलोडेड भाई. काफी टट्टी रील थी ये. मैं बाद में आराम से रिकॉर्ड करूंगा.
बट हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर देना. इंस्टाग्राम पे भी ऑल्सो आई एम केवी रिएक्ट्स, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड. You started supporting United because of the history, the trophies they won under Sir Alex, the aura around United, most of the people suppose a team that has won something. फिर स्क्रिप्ट तो बनाओ. स्क्रिप्ट बनाने की क्या फायदा यार. कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है. मैं कह तो रहा हूँ टट्टी रील है. मैं डिलीट भी कर दी. तो केवी ब्रो होता ऐसे है. एपिसोड 3 में वो, अरे बे यार. हाँ तो स्पेलिंग बंगाल ही है, सिंसिनाटी बेंगल्स नहीं, बंगाल ही है, देख लो जाओ. भाई ये एक मिनट, सिंसिनाटी बेंगल्स है. ये देख, सिंसिनाटी बेंगल्स ही है. क्या बात कर रहा है. ये है टीम का नाम यार. कैसी बातें कर रहा है बता. अभी मैंने सर्च करा बेंगल्स एनएफएल टीम, तो उसमें सिंसिनाटी बेंगल्स लिख के आ रहा है. आप लोग लड़ते रहो, इट डजंट मैटर. तो जब से मैंने सपोर्ट करना शुरू किया है, वी बिन शिट. छोड़ भाई, नहीं समझेगा. चेल्सी से सोललेस क्लब. अभी खुद गाली दे रहा था ये चेल्सी को. बाय द वे सबको बैन दे दूंगा. कम ऑन यू गनर, स्पैम मत करना. अरे बी अवेयर. अबे यार ये क्या. जा अपलोड, जो अपलोड करते हो वो मेरे को ठीक करना पड़ेगा. अच्छा अच्छा, बेंगल नहीं बोला मैंने. छोड़ो, चलो ठीक है. चलो गाइज, रात के 3 बज चुके हैं. आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड कल गेमिंग वेमिंग करते हैं. कल गेमिंग स्ट्रीम या ऐसा ऐसा कुछ करते हैं. और तो कुछ है नहीं मेरा. हाँ, कल आईएसएल का मैच है. आई थिंक ईस्ट बंगाल का मैच है जमशेदपुर के साथ. वो सर शाम के 7:30 बजे, तो उसकी स्ट्रीम कर सकते हैं. अ, भाई ये है टीम का नाम मेरे भाई. Pegalong on Sunday is confirmed. There is no way that is not going to be a Pegalong. That is going to be a super Pegalong. 4 घंटे की स्ट्रीम होगी. एंड मैं होने वाला बहुत बुरी तरह से भंड. भाई मैं लिख तो दिया. कितनी बार लिखूं मैं. जो मैंने लिखा है वो सही है. ईस्ट बंगाल. मेरा दिमाग मत खराब कर यार. रात के 3 बजे नील नील मैच देखने के बाद. तो हाँ गाइस, संडे को पेगालोंग कंफर्म. मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल. कल कुछ गेमिंग स्ट्रीम कर लेंगे. डिस्कशन भी कर सकते हैं आर्सेनल के ऊपर. ऑल्दो आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन करने की जरूरत है. मेरी आंख लाल हो रही है क्या. मेरे को चश्मा लगेगा बहुत जल्दी. मेरे को लग रहा है टच वुड ना लगे. सोचो चश्मे के साथ कैसा लगूंगा मैं. हाँ मेरी आंख लाल हो रही है. चलो बंद करता हूँ. चलो गाइज, गुड नाइट. बाद में मिलते हैं. कल मिलते हैं. टेक केयर, सी यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड आई शैल सी यू ऑल वेरी सून.